ख्वाब तो ये सिलसिले हुए, दूर तक निगाहों में है गुल खिले हुए। देखा एक ख्वाब तो ये सिलसिले हुए, दूर तक निगाहों में है गुल खिले हुए। ला 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 ला। मैं सभी का स्वागत करती हूँ अनिला रामपुरिया। कैन यू हियर मी? यस। सो शांतना, थैंक यू सो मच। और ये गाना देखा एक ख्वाब तो ये सिलसिले हुए, क्योंकि जब हम ख्वाब देखेंगे तभी सिलसिले होंगे। तो ख्वाब देखने की शिद्दत होनी चाहिए, वो बिलीफ होना चाहिए। क्योंकि ख्वाब देखने से हम क्यों डरने लगे हैं, आई रियली डोंट नो। So this is what today we are talking at Music Veranda, and we are decoding a very beautiful book, The Secret, which is a 2006 self-help book by Rhonda Byrne, based on the earlier film of the same name. And to do this, we have Pooja. Yes, Pooja, she's an author, she's a life coach. She creates happy places, she creates happy people, and she's so much more. So a warm welcome to Pooja, to our Music Veranda. Or Pooja, she's a chartered accountant by profession, but so many other things by passion. So in today's program, we'll know and understand how she learned this power of manifestation. तो मैंने आज गुलजार साहब की एक छोटी सी शायरी पढ़ रही थी, और उसमें लिखा था, इतना क्यों सिखाई जा रही है जिंदगी, हमने कौन सी सदियां गुजारनी है यहाँ। जी हाँ, हमें सदियां तो नहीं गुजारनी है यहाँ पे, लेकिन जो हमें असली बात सीखनी थी वो तो जिंदगी ने सिखाई नहीं है। तो जो असली सीखना था वो तो सिखाया ही नहीं हमें। जिंदगी भागते रहे, सपने देखते रहे, लेकिन फिर ताने भी सुने और भूल जाते थे कि सपनों पर क्या हम अपने एतबार भी कर सकते हैं। होते जा रहे थे, जिंदगी को छोड़ दिया था जीना, लेकिन आज हम वापस उन्हीं सब चीजों को जोड़ रहे हैं विद पूजा। A warm welcome to Pooja. Let's applause, let's clap for Pooja. Everybody, I would request सब लोग म्यूट करें और क्लैप करें पूजा के लिए। Welcome Pooja ji. Thank you for the warm welcome, Anila ji. So Pooja, to start with, I would like to understand how did you start believing in power of manifestation, in your own power of dream? So share a little about this journey. Yeah, so I'll start by sharing what I am currently today, or you want me to go back to the earlier days, like from where I began? I'll just begin with who I am currently. So I'm a CA by profession, as Anila ji ने already बोला है, और मैं passionately भी CA हूँ, but chartered accountant नहीं, creative artist हूँ passionately. So creative artist के form में मैं poetry लिखती हूँ, happy spaces बनाती हूँ, and also I'm a happiness and a life coach. So the journey how I came here, that's a very beautiful journey, and through this program I'm here to share that journey with all of you. How I began in the manifestation journey was when I was can you hear me clearly now? Yeah, go ahead. Okay, so how I began in a manifestation journey was when I was a 6-year-old basically. So जब मैं 6 साल की थी, एक छोटा सा सपना था जो मैंने देखा था. Like I used to tell my dad every time that I wish we lived in a bungalow which had a beautiful garden, and you and I are having tea in the gardens. I was basically, the teapot person, wherein I was very fond of having those pot teas. वो Bollywood movies देख के probably, or I don't know what, in that young age also, where you have that white furniture in the garden and everybody is with the family sitting and reading the newspapers and drinking tea together. That was one of my childhood dreams. I think that's where my manifestation journey began. It dates back to those days. I didn't know about The Secret for way too long. In 2008, not even 2008. Yeah, 2008, I think. I saw the movie Secret directly even before I read the book. And then I took up the book and I read it. So I have been practicing law of attraction since when I was 6-year-old without knowing about law of attraction. So that's how I date my manifestation journey back. It started with a very small dream of having a bungalow and with a garden and tea. So even today, I am very fond of teas, and every time I sit for a session, I always have my tea kettle with me. Yes. Wonderful. Very nice.
So Pooja, you are a chartered accountant by profession, so you know, like from that profession turning to this, you know, must have been a decision. So what made you believe so much that you took it as a profession? Because you're teaching a lot of people and making them believe. Absolutely. So I, since I was a child, again, since I was in like grade 6 probably, my dad had always told me that, you know, you have to do CA, because my father is a CA and I come with a family of CAs. So CA was in my mind, but also teaching was on my mind. So basically, जब वो slam book भरते हैं ना 10th grade में, 12th grade में, हम nostalgic memories में पीछे जाएं तो, in all of the slam books I used to write that, you know, my aim in life is to become a CA and a teacher. So I think I achieved both. I became a CA and a teacher. I started off with teaching CA students only, so that I don't completely go off the profession. So I'm still continuing to teach. I'm give back the CA students, give back the CA profession, the one that gave me the degree and gave me the confidence. So मैं आज भी CA students को पढ़ाती हूँ, personal grooming sessions देती हूँ, communication skills, a lot of things. So I wouldn't say that I'm completely off track CA, but yeah, passionately I'm more into teaching. So I'm able to do both, my father's dream and my dream together. So yeah. The idea of, I would say my teacher, my school teacher, my English teacher, I think she really inspired me to get to teaching, because I believe that teachers are supposed to be very warm and very welcoming, not very, you know, people who understand and relate to you. So I really found that quality in my English teacher, and I wanted to become the same. I wanted to be that person who people can easily approach and easily connect to and take in information, rather than, you know, somebody putting it on you. कोई हमारे ऊपर कुछ थोप रहा है. I didn't want that. I wanted people can easily approach us and easily be guided. So that's what probably got me into teaching altogether. Wow, wonderful. So that's what it is important that we know enough about, because it's just going very passion, और हम में से लिए शायद लाइफ टर्निंग एक्सपीरियंस होगा. कुछ लोग हैं जो पावर ऑफ मैनिफेस्टेशन को जानते हैं, कुछ लोग प्रैक्टिस भी करते हैं और कुछ लोग एकदम नहीं जानते हैं. सो वी हैव ऑल काइंड ऑफ पीपल टुडे एट म्यूजिक वेरांडा एंड ग्रीन वेरांडा. और एक गाना हो जाए के लिए एंड देन सेशन. सो हम मधु मुकेश जी से रिक्वेस्ट करूंगी कि हमें एक गाना सुनाए. मधु मुकेश जी इंदौर से. या हो गया मेरा परिचय. मैं इंदौर से हूँ, एयरपोर्ट रोड से. आप साकेत से हैं, पूजा जी, और आप दिल्ली से हैं, माँ श्वेता जी दिल्ली से हैं. हाँ जी, आइए गाना सुनते हैं. जिंदगी कैसी है पहेली हाय, कभी तो हंसाए कभी रुलाए. जिंदगी कैसी है पहेली हाय, कभी तो हंसाए कभी रुलाए. कभी देखो मन में ही जागे, पीछे पीछे सपनों के भागे. कभी देखो मन नहीं जागे, पीछे पीछे सपनों के भागे. एक दिन सपनों का राही चला जाए सपनों से आगे कहाँ. जिंदगी
कैसी है पहेली ये हाय, कभी तो हंसाए कभी रुलाए, जिंदगी कैसी है पहेली ये हाय, कभी तो हंसाए कभी ये रुलाए. Thank you. Beautiful, beautiful, lovely, and that's the power of a song. You know, एक 2.5 मिनट का गाना कैसे आपकी जिंदगी को एक नई दिशा दे देता है, नए मायने दे देता है. बहुत सुंदर. एक दिन सपनों का राही चला जाए, सपनों के आगे कहाँ. बहुत सुंदर मुकेश जी, थैंक यू सो मच. एंड Mahashweta, I would request you to unmute yourself and welcome Pooja to our program. Hi Pooja, you know the way you speak, you are a gorgeous person, and the kind of speech you have, it makes you all the more gorgeous, and it Thank makes you. us feel that yes, it is very important to believe in yourself, because with your self-belief, if you have been able to achieve so much, with self, faith within ourselves, we will also be able to achieve. It's like that. Everyone is meant to be an amazing person, and why not? Everybody deserves an amazing life. Yeah. Yeah, so the song that I have chosen for you, it is, one of my favorite, songs by KK. Again, at this point in time, people are feeling very sad that he had passed away, and what an amazing voice he had. I am saying that, he had a short life, but he has made it large. So that is what it's all about. The playlists will always be incomplete without his songs. So, and I have read Secrets, and I have actually read all the series, by Rhonda Byrne. And there she has written a very beautiful statement, which has actually stuck. And that's my takeaway from the book Secret, which says that, you have to live in the moment. You make this moment, seize the day, you make this moment large, you make this moment happy. With the vibration high, having the vibration high, you will be able to create better moments, and you will be, the more happier, joyful your present is, you will be able to create a better, happy, tomorrow. If you're not Absolutely. happy today, you will not be able to create a happier, tomorrow, because you attract all the good things when you're happy. Happiness is what? It's light in weight, and sadness is dense. So when you have to fly high, you travel light, right? So it's like that. So let's seize that day. So with the anticipation, it goes like this. Thank you so much.
Thank you. Thank you, Mahashweta. So we are setting the mood, Pooja, to make the show more vibrant and we attract more manifestations in our life. I love the way, sorry to interrupt, but I just love the way she began, like full of joy, full of happiness. And that's the spirit. That's all we need, you know, just that Wow. spirit that was there in that song. Wow. Wonderful. तो Seriously. पूजा ओवर टू यू और अब आप बताइए जो सीक्रेट बुक है इसकी क्या इंसाइट्स है और इसका सबसे आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है. ओके, आई जस्ट बिगिन. सो सबसे बड़ा टेक अवे मेरे लिए, you know, and what I want to pass on to everybody, there is this very beautiful 3 words that I really think are very important. The 3 words are: intention creates intensity. It's your intention that creates the intensity. It's not the process. It's not how you do it, but what you want. What you want is the focus, and the process just follows. 80% of us, all of us as beings, we generally depend on you know, thinking about how will we get there, how will we get this money, how would we get this relationship right, or how would we get that happiness. We're only working and focusing on the house. So the idea that the secret has brought, the insightful secret part is that there is no need to focus on the house at all. That universe will take care of. You just have to focus on what you want. So it's like the genie and the relationship of genie and Aladdin, where you just ask what you want and you just get what you want. And the way is made to you. That's how I have been manifesting since I was a 6-year-old. Literally, I just asked the universe what I wanted and I just gave in and I believed in it. And it just, the process kept coming to me and I just followed the path. So that's why I call myself a page turner, path breaker. There are a lot of adjectives that I keep changing time and again to my name. Whatever I want to attract, I just put that as my adjective, as a prefix to my name. So that's one of the insights that I've taken, that whatever you want. So like, for example, Mahashweta ji has a beach background, you know, on her screen. So I think Zoom helps a lot in manifestation also, because what you want, you put that on your background and it's like, you know, she is in the beach. So it's like group manifestation. Now everybody's seeing her in the beach and everybody's admiring that beach. So it's like everybody's manifesting that beach for her. Similarly, you know, you try to feel and get yourself in that receiving frequency, wherein whatever you want is already yours. You've asked for it, but you believe so much that whatever you've asked, you've already received it. That's what I do, and that's what I've been doing. I like the way that Gaurav ji just changed his background from where he wanted to go to where he. So it's really works like that. It's that beautiful. You just ask the universe and it gives it to you, and it will create. Maybe sometimes, you know, it creates disturbances elsewhere, but that's not your problem, right? You just want what you want and you get. That's the beauty of it. It'll create all the vibrations. It'll change all the vibrations in the entire universe just for you to get what you want to get. It's like that child wishing on Christmas from Santa Claus that I want this and I want this and I want that, and he wakes up in the morning and he receives it. It's that magical. Gigi, And is it inspiring? and also one of the very थोड़ा सा इसको हिंदी में भी बताएं तो it will be really nice, you know. yes. तो एक और insightful चीज है जो बहुत बेसिक है, सीक्रेट उससे शुरू होता है. Thoughts become things. So ऐसा है कि हमारी सोच पे सब कुछ है. जैसा हम सोचते हैं वैसा ही हम बन जाते हैं. So there's a very simple exercise that I have. Maybe I'll make you do it a little later. But जैसा हम सोचते हैं, so it's like आपके thoughts, आपके words और आपके actions, ये तीनों का एक alignment होना चाहिए. ओके अगर आपको कुछ भी मैनिफेस्ट करना है लाइफ में, तो आपके थॉट्स, जो आप सोचते हैं वो ही आप बोलते हैं, जो आप बोलते हैं वो ही आप करके दिखाते हैं. अगर इनमें से किसी भी एक का तालमेल नहीं होगा तो सारी गड़बड़ हो जाती है, और 90% लोग वही गड़बड़ कर जाते हैं. मतलब हम सोचते हैं कि हमें ये चाहिए, हमें वो चाहिए, लेकिन हमारे थॉट्स में हम खुद सोचते हैं, लेकिन हम हमारी सच्चाई बता नहीं पाते हैं. जब हमारी सच्चाई बता नहीं पाते हैं तो हमारे वर्ड्स और हमारे थॉट्स कॉन्ट्रडिक्ट कर जाते हैं. दैट्स द होल क्रक्स टू दिस मैनिफेस्टेशन, कि अगर आपका अलाइनमेंट खुद में ही नहीं है तो यूनिवर्स कंफ्यूज हो जाती है. यूनिवर्स आके नॉक करती है दरवाजे पे और देखती है कि ये तो बहुत कंफ्यूज्ड है, इसको तो खुद ही नहीं समझ में आ रहा है इसको चाहिए क्या, वो वापस चली जाती है. इट्स लाइक दैट. तो मेहमान घर आया है, दरवाजे पे खड़ा है, डोरबेल रिंग कर रहा है, बट आप खोल नहीं रहे हो दरवाजा. अपॉर्चुनिटी आपके सामने, बट यू आर नॉट ओपनिंग इट बिकॉज you're contradicting and you're confused. That's the whole crux of it. वहीं पे सारा मैनिफेस्टेशन खत्म हो जाता है और वहीं से सारा मैनिफेस्टेशन शुरू भी होता है. ऐसा नहीं है कि आपने एक बार दरवाजा बंद कर दिया तो वापस नहीं आएगी, वो वापस आएगी, बट प्रोवाइडेड आपने अपनी सोच बदल ली है. तो सब कुछ सोच पे निर्भर है. इट्स ऑल इन योर माइंड. That's what the secret teaches us. Wonderful. You're so convinced about it, the way you're talking, you know, as if like
You have complete mastery over the subject. It has completely changed my life. मतलब छोटी से छोटी चीज, बड़ी से बड़ी चीज, मतलब सोचने के ऊपर है. And you know, with time you'll come there. Some things come like immediately, but some things take time. But I know it comes. फिर वो जो प्रोसेस होता है ना, वो प्रोसेस अच्छा भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है, शायद troublesome भी हो सकता है, but you will get there. So what happens is, when you really believe in something, you will go through that troublesome journey also to get that. So that is what belief is all about. So I believe that कोई भी चीज अगर आ रही है तो it's for a bigger cause, it's for a bigger good, higher good के लिए, तो इसको पार कर लो. छोटी से छोटी चीज है, आपको नदी दिख रही है बहुत सुंदर, लेकिन यहाँ पे वो बहुत रॉकी पाथ है, तो उस रॉकी पाथ को क्रॉस करके अगर बहुत नदी सुंदर दिख रही है तो आप वो रॉकी पाथ क्रॉस कर लोगे. That's what it is all about, belief and faith. So सब कुछ faith पे आ जाता है. जब आपको वो सुंदर समुद्र दिख रहा है वहां पे, तो आप सब कुछ कर लोगे. It's like that. Oh, this is so wonderful. This is so wonderful. So you wanted us to do an exercise? Should we Yes, if you have your paper, that, if right? you have a paper and diary, everybody has, just take it out. Right. And So Pooja, yes, what we'll do is हम लोग सबको बोल देते हैं अपना डायरी और पेन इकट्ठा कर ले. तब तक शांतना से मैं रिक्वेस्ट करती हूँ एक छोटा सा गाना वो गा सकती है. बिल्कुल. It's a beautiful प्रार्थना which you had requested, and I would request कि सभी लोग Facebook viewers जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सभी लोग अपने साथ एक कॉपी और एक पेन लेके वापस आ जाए, because Pooja is helping us with a beautiful exercise. So, and in the meantime, Shantana, over to you. Thank you, Anila. And here the prayer goes. I wish I can heal the world, and may the world heal. मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है, मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है. न मिलती अगर दी हुई दात तेरी, न मिलती अगर दी हुई दात तेरी, तो क्या थी ज़माने में औकात मेरी, तो क्या थी ज़माने में औकात मेरी. तुम्ही ने तो जीने के काबिल किया है, तुम्ही ने तो जीने के काबिल किया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है. मुझे है सहारा तेरी बंदगी का, मुझे है सहारा तेरी बंदगी का, जिस पर गुजारा मेरी जिंदगी का है, जिस पर गुजारा मेरी जिंदगी का. मिला मुझे कुछ तुम्ही से मिला है, मिला मुझको जो कुछ तुम्ही से मिला है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है. किया कुछ न मैंने शर्मसार हूँ मैं, किया कुछ न मैंने शर्मसार हूँ मैं, तेरी रहमतों का तलबगार हूँ मैं, तेरी रहमतों का तलबगार हूँ मैं. दिया कुछ नहीं बस लिया ही लिया है, दिया कुछ नहीं बस लिया ही लिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है. Thank you God for everything. thank you so much. Thank you. Thank you. शुरू करें एक्सरसाइज. Yes. ओके, सो एक छोटा सा काम है, आप लोग बस 5 मिनट ले लीजिए, बट वो 5 मिनट में सिर्फ वो चीजें सोचिए. या 5 मिनट में सिर्फ वो चीजें सोचिए
जो आपको नहीं चाहिए लाइफ में, या जो आप दिन भर में बहुत बार बोलते हैं कि मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे ये नहीं चाहिए। सपोज आप गुस्सा हो जाते हैं तो आप बोलते हैं आई डोंट वांट टू बी एंग्री एनीमोर। या सपोज एक छोटी सी चीज है कि आपको ये खाना मिला है और आपको ये खाना नहीं पसंद है, तो आप बोल देते हैं ना कि आई डोंट वांट टू ईट दिस फूड और आई डोंट लाइक दिस। ऐसी कोई भी चीज है दिन भर में जो आप मना करते हैं, या जो चीज आपको ऐसा लगता है कि मुझे ये नहीं चाहिए, वो चीज हो सकती है, वो लोग हो सकते हैं, वो इच्छाएं हो सकती है, कोई सी भी चीज, उसको आप बस लिख दीजिए एटलीस्ट 5 to 10 पॉइंट्स ऑफ व्हाट यू डोंट वांट इन लाइफ, जो आप रोजाना तौर पे बोलते हैं या रोजाना तौर पे उस बात से रूबरू होते हैं कि मुझे ये नहीं चाहिए। आई जस्ट वांटेड टू मेक अ नोट ऑफ दैट। बेसिकली एक आई डोंट वांट लिस्ट बनाना है। दिन भर में हम बहुत बार बोलते होंगे आई डोंट वांट, आई डोंट वांट, तो बस आपको उसको लिखना है आई डोंट वांट, जो भी आपको याद आ रहा है। अगर इन आई डोंट वांट के बीच में आपको कोई वांट भी याद आ जाता है तो उसको दूसरे पेज पे आई वांट लिस्ट बना दीजिए। तो आप 2 लिस्ट बनाएंगे बेसिकली, एक आई डोंट वांट लिस्ट और एक वांट लिस्ट। जैसे जैसे आपको याद आते जाए कि आपको ये चाहिए, आपको ये याद आ रहा है, तो आप उसको लिखते जाइए वांट लिस्ट में, और जो नहीं चाहिए उसको डोंट वांट लिस्ट में लिखते जाइए। जब आपको ऐसा लगता है कि आपके 5 से 7 पॉइंट्स भी हो गए हैं आई डोंट वांट लिस्ट में, तो आप हैंड रेज, रिएक्शन में हैंड रेज कर दीजिएगा। इन द रिएक्शन जस्ट रेज योर हैंड। आपने डोंट वांट वांट दोनों लिस्ट बना ली गौरव जी? वेरी Yes. क्विक, वेरी क्विक। और कोई है और जिसने भी हो 5 से सकती 7 है, पॉइंट जस्ट जो हाँ mind में- अभी अभी सिर्फ 5 से 7 पॉइंट ही लिखने हैं। आप उस लिस्ट को बढ़ाते जाइएगा बाद में। बहुत सारी चीजें, मतलब वो मतलब किताब भर सकती है, इतनी चीजें होती है हमारे पास लिखने की। Yes, I agree. वेरी गुड, वेरी गुड। तो कोई शेयर करना चाहेगा अपनी डोंट वांट लिस्ट हमारे साथ यहाँ पे? Huh? I can. यस प्लीज गो अहेड। So I don't want to wake up late. ओके I don't want to stress for few things. ओके I don't want to delay important tasks. And sometimes, I do few things, so I don't want to waste my time doing Okay. particular stuff which I don't. So this is a few of the things. ओके विल पॉज दे अभी के लिए। सो आप बताइए मुझे इनमें से कितनी चीजें आपको लगता है कि बहुत फ्रीक्वेंटली हो रही है जो आपने डोंट वांट लिस्ट में लिखी है? कितनी चीजें जो ये फ्रीक्वेंटली regularly हो रही है, है? regularly रेगुलरली है, और आप ये रेगुलरली सोच रहे हैं कि मुझे ये नहीं करनी, करेक्ट? इफ आई एम नॉट रॉन्ग हियर? sort of, yes. Sort of, very good. The point to be noted here is that he is regularly facing these issues and regularly he's been thinking कि मुझे चीजें नहीं चाहिए। So ये समझ, एक मिनट हम अनिला जी के पास जाते हैं। अनिला जी आपकी वांट लिस्ट शेयर कीजिए, मैं वापस आती हूँ आपके पास। आपकी वांट लिस्ट शेयर कीजिए। अच्छा, आई वांट, आई डू नॉट वांट, मैं पहले शेयर करूं? ठीक है, सबको अपनी डू नॉट वांट लिस्ट शेयर करने बड़ा एक्साइटमेंट आता है। I do not want conflicts. I do not want negativity. I do not want messy environment. I do not want any politics, and I do not want any illness. वेरी गुड। आई थिंक 80% सबके साथ ये होता है, आई डू नॉट वांट एनी इलनेस। जब हम बीमार हो जाते हैं हम बार बार ये सोचते हैं आई डू नॉट वांट एनी इलनेस।
ठीक है, वेरी गुड। ओके, अब आप वांट लिस्ट शेयर कीजिए। Love, harmony, peace. Yes, I want. Yes. I want. हाँ, I really अच्छा, want. दिन में से कितनी बार आप ये बोलते हैं कि मुझे आई वांट लव, हार्मोनी, पीस? दिन में I कितनी बार बोलती हैं आप ये? love, harmony, peace, health, prosperity, money, ये आप creativity. कितनी बार सोचती हैं दिन भर में? How many times do you think of this? हाँ, मैंने तो ये लिखा हुआ है, एक बार एक बार बस मतलब आप मैंने आप लिखी ये हुई वांट है। फ्रीक्वेंसी में ज्यादा रहती है या डोंट वांट फ्रीक्वेंसी में ज्यादा रहती है? आप ये Sorry, वांट क्या बोले फ्रीक्वेंसी आप? में ज्यादा रहती है या डू नॉट वांट वाली फ्रीक्वेंसी में ज्यादा रहती है? किस चीज के बारे में ज्यादा सोचती है दिन भर? ऐसा सोचते नहीं हूँ, बट ऐसे सोचते नहीं है कॉन्शियसली, बट एफर्मेशंस पढ़ते हैं, क्योंकि बोलते हैं कि एफर्मेशंस पढ़ने चाहिए। And जब से ऐसा कर रहे हैं, हाँ, यस, जब से ऐसा कर रही है ऐसी तब चीजें हो। आपकी वॉइस बहुत ब्रेक करी। ओके, हम जीजे जी के पास जाते हैं। गौरव जी, यस, तो आप बताइए, अब आप इस लिस्ट को वापस से पढ़ेंगे? और किसी से पूछिए तब। हाँ हाँ, यस, एक मिनट, पहले मैं गौरव जी को बोलूंगी, आप अपनी डोंट वांट लिस्ट में से सारे डोंट हटा दीजिए, ठीक है? और अब पढ़िए, अब वो लिस्ट को वापस से पढ़िए। I want to wake up late. I want to waste time. I want to stress for few things. I want to delay important tasks. अजीब सा। वेरी गुड, वेरी गुड, अजीब सा हो गया ना? ठीक है, अब हम दिनेश जी के पास जाते हैं। दिनेश जी, आप बताएंगे आपकी डू नॉट वांट लिस्ट में से डू नॉट हटा दीजिए, सिर्फ उसको वांट के तरीके से समझिए। I want anxiety. ओके, ग्रांटेड। I want I'm the security universe. complex in I want ग्रांटेड, security complex. I want procrastination. ग्रांटेड, I want negativity. I want Granted. illness. वेरी गुड। यस गौरव जी, आपको कुछ बोलना है, बोलिए। I was just saying तथास्तु आप करे जा रहे हो। एग्जैक्टली, यही होता है, यूनिवर्स यही करती तथास्तु। तो यूनिवर्स, हाउ डज इट प्ले? यूनिवर्स डजंट अंडरस्टैंड दिस डोंट फ्रीक्वेंसी एट ऑल। इट डजंट अंडरस्टैंड कि आपने वर्ड्स में डू नॉट यूज किया है या क्या यूज किया है, आपको क्या नहीं चाहिए। यूनिवर्स सिर्फ फीलिंग फ्रीक्वेंसीज को समझते हैं कि आपकी फीलिंग क्या है। जब आप डू नॉट जब हम वांट, कहीं जा रहे होते हैं ना, हम कहते हैं लेट ना हो जाए, वो लेट हो जाए। एग्जैक्टली, तो आपने समझा, जो चीजें हमें नहीं चाहिए होती है हम वही अट्रैक्ट करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि मैनिफेस्टेशन कुछ नया है, आप बचपन से मैनिफेस्टेशन करते आ रहे हैं सब लोग, बस ये है कि मैनिफेस्टेशन गलत डायरेक्शन में करते आ रहे हैं, डायरेक्शन सही करना है, दैट्स ऑल। That is the only change that is going to happen. You all have been manifesting the wrong things probably because आपकी ये सोच थी कि मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे नहीं चाहिए। तो यूनिवर्स ये समझती है कि किस चीज के बारे में गौरव जी ज्यादा सोच रहे हैं, तो चलो इस चीज के बारे में उनको ज्यादा सोच रहे हैं, मतलब यूनिवर्स ये समझती है कि उनको ये चीज बहुत अच्छी लगती है। Okay, he's very comfortable because he's always thinking about it. So give him more of that. तो अब आप उसको प्लूरल में पढ़ना, आपकी लिस्ट को गौरव जी, आपकी लिस्ट को प्लूरल में पढ़ना। आई वांट, उसके बाद पढ़ो आई डू नॉट वांट को डोंट हटा दो और आई वांट को प्लूरल में पढ़ो। प्लूरल में as in I want to wake up late. I want to wake up late every day, प्लूरल हो गया ना, एक दिन नहीं, रोज। उसके बाद दिनेश जी ने लिखा आई वांट एंजाइटी, आई वांट मोर एंड मोर इंस्टेंसेस ऑफ एंजाइटी, आई वांट मोर एंड मोर इंस्टेंसेस ऑफ प्रोक्रेस्टिनेशन। तो यूनिवर्स क्या बोलता है कि जिस चीज के बारे में आप ज्यादा सोच रहे हो वो चीज उसको बहुत पसंद है, तो उसको अबंडेंस में दे दी जाए, क्योंकि यूनिवर्स ऑलवेज वर्क्स इन अबंडेंस बिकॉज द यूनिवर्स इज इनफाइनाइटली अबंडेंट। तो उसके पास इतना है देने के लिए, इतना है कि आप जो मांगोगे वो मिल जाएगा, इतना सिंपल। अच्छा, अगर हम नहीं बोल रहे, सामने वाला बोल रहा है तो क्या? जैसे जो पॉजिटिव या नेगेटिव स्टेटमेंट है हम नहीं बोल रहे, घर में कोई और बोल रहा है तो कोई और बोल रहा है तो उनको बोलने दीजिए, वो अट्रैक्ट करेंगे ना। अगर वो आपके लिए बोल रहे हैं तो आपके पास ऑप्शन हमेशा होता है कि मैं उसको अपनी पॉजिटिविटी और अपनी एफर्मेशन से चेंज कर दूं। तो कोई हमारे लिए कितना भी नेगेटिव बोल रहा है, वी ऑलवेज हैव द पावर टू चेंज दैट। सो वन नेगेटिव, देयर विल बी लाइक हंड्रेड्स ऑफ नेगेटिव्स, वो हंड्रेड्स ऑफ नेगेटिव्स को आप वन पॉजिटिव से कन्वर्ट कर सकते हो। आपको सिर्फ एक पॉजिटिव थॉट लेके आने, वो सारे नेगेटिव्स नेगेट हो जाएंगे अपने आप, ठीक है? अब मैं आपको ये एक पॉइंट बताती हूँ यहाँ पे, जितने भी लोगों ने डू नॉट वांट लिस्ट लिखी है, जब आपने डू नॉट हटाएंगे तो आप वांट्स पढ़ेंगे, आपको रियलाइज होगा कि आप ये क्या अट्रैक्ट करे जा रहे हैं। एक मैं सिंपल सा एक फंडा बताती हूँ कि आप आज जो हैं, अगर आप प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे हैं, अगर आप एंजाइटी में हैं, अगर आप स्ट्रेस में हैं, अगर आप लेट उठ रहे हैं, तो अपने पिछले थॉट्स पे जाके देखिए क्या आप इन थॉट्स के बारे में सोच रहे हो रोज। अगर आप इन थॉट्स के बारे में सोच रहे हो तो आप अपने प्रेजेंट में अट्रैक्ट करो। बेसिकली आपके पास्ट में जो आप सोच रहे थे वो आपका प्रेजेंट बन गया है। कॉन्स्टेंटली आपके दिमाग में जो चीजें चल रही थी वो आपका प्रेजेंट बन गया है।
तो आपका फ्यूचर जो आप बनाना चाहते हो, उस फ्यूचर का पास्ट क्या होगा? उस फ्यूचर का पास्ट आपका प्रेजेंट है, जो आपका आज है, करेक्ट? तो अगर आपको आपका फ्यूचर सही डायरेक्शन में चाहिए, आपको फ्यूचर में स्ट्रेस नहीं चाहिए, फ्यूचर में एंग्जाइटी नहीं चाहिए, फ्यूचर में ये नहीं चाहिए कि मैं लेट उठूं, तो आप प्रेजेंट में उसको ये सोचोगे कि मैं ऑलरेडी जल्दी उठ रहा हूँ। ये नहीं सोचोगे कि मुझे लेट नहीं उठना है, आप ये सोचोगे कि मैं ऑलरेडी जल्दी उठ रहा हूँ। वांट भी खत्म हो जाएगा। आई एम वेकिंग अप एवरी डे, आई एम एब्सोल्युटली एट पीस। जब हम एब्सोल्युटली एट पीस है तो एंग्जाइटी की बात ही नहीं है। एंग्जाइटी जब आती है जब अंदर से पीस डिस्टर्ब हो जाती है, ठीक है? मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत हैप्पी, मैं बहुत पीसफुल हूँ, ओके मैं अपने सारे काम टाइम पे कर रहा हूँ, तो प्रोक्रेस्टिनेशन अपने आप खत्म हो गया। मुझे प्रोक्रेस्टिनेट नहीं करना है, इस पे फोकस नहीं करना है। सो बेसिकली आपका फोकस जिस चीज पे, वो चीज आपके साथ हो जाती है। तो यूनिवर्स सिर्फ फीलिंग फ्रीक्वेंसी समझते कि आपकी फ्रीक्वेंसी, आप कौन सी फ्रीक्वेंसी पे, आप कौन सी वाइब्रेशन पे हो, उस वाइब्रेशन को वो अबंडेंटली आपको दे देती है। क्योंकि यूनिवर्स दो चीजें समझती है, एक फ्रीक्वेंसी और एक अबंडेंस, और वो दोनों चीज आपको भरपूर मिलेगी। तो आप ज्यादा से ज्यादा इंस्टेंसेस वो अट्रैक्ट करोगे जो आपको उस डायरेक्शन में ले जाएंगे जिस डायरेक्शन में आपकी सोच है। थॉट्स बिकम थिंग्स, align your thoughts into your words and into your actions together, and when you do that, only focus on the intention, because your intention creates intensity. प्रोसेस आपको सोचने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ प्रेजेंट टेंस में पॉजिटिव सोचना है। इट्स लाइक जो आप पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाते हो, पीपीटी, उस पीपीटी को हम अलग तरीके से लेंगे तो इट्स कॉल्ड पॉजिटिव प्रेजेंट टेंस। इंस्टेड ऑफ पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन इट इज कॉल्ड पॉजिटिव प्रेजेंट टेंस। सो मैनिफेस्टेशन जो भी होता है वो सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव प्रेजेंट टेंस में होता है। 3 फ्रीक्वेंसी होती है आपकी, आस्क फ्रीक्वेंसी, बिलीव फ्रीक्वेंसी एंड रिसीव फ्रीक्वेंसी। तो आपको पहले तो यूनिवर्स से मांगना है आपको क्या चाहिए। जब आप मांगते हो तो आपको आई विश बोलने की जरूरत नहीं है अब, क्योंकि आपको पता है कि यूनिवर्स तो अबंडेंट है, आप जो भी मांगोगे वो मिल जाएगा। तो आपको विश बोलने की जरूरत नहीं है, बस आपकी वांट को रखना है, प्लेस करना है, ओके? बिलीव करना है कि वो ऑलरेडी आपको मिलेगा, क्योंकि आप वर्दी हो, क्योंकि आप डिजर्विंग हो, क्योंकि आप अमेजिंग हो। ये फ्रीक्वेंसी में लाना है हमको, और उसको रिसीव कर चुके हैं हम। और अब रिसीव करने के बाद जब आप कोई चीज रिसीव करते हो, आपको कोई चीज बहुत चाहत है, आपको मिल जाती है, तो आप क्या फील करते हो उसके लिए? व्हाट डू यू फील? डू यू फील सैड? डू यू फील डिप्रेस्ड? डू यू फील लाइक ये चीज मुझे नहीं आ रही? नहीं, क्या फील करते हो आप? व्हाट डू यू फील? कैन एनीवन शेयर हाउ डू दे फील व्हेन दे गेट व्हाट दे वांट? शिवानी, यस शिवानी। When we feel happiness, I mean, We like feel ऐसा लगता है top of the world, we are on top of the world, we Absolutely. got what we want. We feel super happy, Shivani, we yes. feel on top Yes. of the world, we Yes. feel all of these things. So why can't you feel that today? What is stopping you from feeling that today? What is stopping you? That negative statement. To come to that vibration, that thing stops. I mean, the steps to go Yes, to that the steps to vibration. go to that vibration, the highest frequency for manifestation or for anything in life, to be connected to yourself in a better way, to be connected to your higher version of yourself, you have to be in the frequency of love, peace, joy and gratitude. That's the highest frequency. तो अगर आप लव फील कर रहे हो, अगर आप जॉय फील कर रहे हो, अगर आप पीस फील कर रहे हो, ओके, और अगर आप ग्रैटिट्यूड फील कर रहे हो, तो आपको जब कोई चीज मिल जाती है तो आप बहुत ग्रेटफुल हो जाते हो ना। आप भगवान के आगे जाके बोलते हो थैंक यू, मुझे चीज चाहिए थी, मुझे मिल गई। तो आप उस चीज का वेट क्यों कर रहे हो कि वो चीज मिलेगी जब मैं थैंक यू बोलूंगी? हम भगवान के जाके एडवांस में क्यों नहीं थैंक यू बोल देते हैं कि थैंक यू, मुझे तो ये चीज मिल गई है। दैट्स व्हाट द यूनिवर्स वांट्स फ्रॉम अस। यस शिवानी। But how do we get to that? Like Very भगवान जी के nice. सामने जाके कैसे उनको बोलना? अभी तो मिला नहीं है, भगवान वो जी के पास frequency जाना कैसे नहीं आएगी है, दिमाग आप अपने यहाँ बैठ के ऐसे ही बोल सकते हो, यूनिवर्स ही भगवान है। यस मैम, आई गॉट इट, बट वो फ्रीक्वेंसी पे आना कैसे है कि वो हैप्पीनेस आए एंड वी स्टार्ट? वो फ्रीक्वेंसी का फर्स्ट स्टेप है अपनी डोंट वांट और वांट लिस्ट बनाना। दैट्स द बेसिक स्टेप। पता तो है कि मुझे चाहिए क्या। जब मुझे पता होगा मुझे क्या चाहिए, मैं उसके लिए लव फील कर पाऊंगी, वो जॉय फील कर पाऊंगी। अभी तो हमें पता ही नहीं ना हमें क्या चाहिए, हमें तो ये पता है कि हमें क्या नहीं चाहिए। अगर मैं आपको डोंट वांट और वांट लिस्ट लिखाऊंगी, सबसे ज्यादा पॉइंट्स आपके डोंट वांट लिस्ट में आएंगे, क्योंकि हमें बहुत शुद्धता से पता होता है कि हमें क्या नहीं चाहिए। उतनी शिद्दत से हमें ये नहीं पता होता है कि हमें क्या चाहिए। वो ओम शांति ओम का डायलॉग है ना, विच इज वेरी वेरी पावरफुल। समवेयर शाहरुख खान इज वेरी मच रिलेटेड टू मैनिफेस्टेशन, कि अगर सच्चे दिल से कोई चीज चाहे तो सारी कायनात, शिद्दत से कोई भी चीज चाहे तो सारी कायनात उसको पाने में आपकी मदद करती है। एग्जैक्टली, इट्स द सेम थिंग। This is taken from Alchemist. Yes, this is taken from Alchemist. Alchemist is the basic. So that was my first book that I ever read, was Paulo Coelho ki Alchemist, in my school days. So before The Secret, I read that. Yeah, so it's a very beautiful book again. And that book also gave me a lot of idea about, you know, dreaming and manifesting. ये चीज हम सब कर रहे हैं, मतलब आप कोई भी ऐसा नहीं है, ये एक लाइफस्टाइल है। It's not a chore. Maximum people
स्टार्ट थिंकिंग दैट मैनिफेस्ट, अच्छा मैनिफेस्टेशन करना होगा, अच्छा इसके लिए टाइम निकालना होगा बैठ के, अच्छा मैनिफेस्टेशन कैसे करते हैं मुझे तो समझ ही नहीं आता. सो इट्स नॉट अ चोर, इट्स जस्ट अ लाइफस्टाइल. आपको अपनी लाइफस्टाइल ही बनानी है, और लाइफस्टाइल बनाने के लिए आपको सिर्फ 4 चीजें चाहिए जो फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है. लव, पीस, जॉय एंड ग्रेटिट्यूड. ये चीजें हम भूल जाते हैं. तो ऐसा एक हमने एक पोस्ट कार्ड लिखा, ठीक है. जब हम पोस्ट कार्ड लिखते हैं किसी को भी, वो जमाना था ना जब हम पोस्ट कार्ड लिखते थे या लेटर लिखते थे, हैंड रिटन लेटर. अब ईमेल के टाइम में हम लिखते ही नहीं है. सपोजिंग हम एक लेटर लिख रहे हैं, तो वो लेटर जब हम लिखते हैं हम बहुत प्यार से लिखते हैं, करेक्ट. तो उसमें हमने लव डाला, ठीक है. जब हम लेटर लिख देते हैं हमें बहुत पीस महसूस होती है. इज इट नॉट? वी फील वेरी पीसफुल आफ्टर राइटिंग अ लेटर. हैव यू एवर रिटन अ लेटर एवर? So you feel the love, you feel the joy, and you feel peaceful. All of these things. So जब ये सारी चीजें लिख देते हैं हम, वो जॉय भी हो जाता है. जब हम डिलीवरी एड्रेस लिख देते हैं ना उस पे पोस्ट कार्ड पे, तो वो जॉय फ्रीक्वेंसी भी आ जाती है कि अच्छा इसको ये लेटर जाने वाला है, जब ये पढ़ेगा तो ये कितना खुश होगा. ऑलरेडी वी आर फीलिंग जॉय, इवन द लेटर इज नॉट येट रीच्ड. अब उस पे जो हम स्टैंप लगाते हैं, जब तक हम उस पे स्टैंप नहीं लगाएंगे, क्या वो लेटर डिलीवर हो पाएगा? आपने लव डाल दिया, पीस डाल दिया, जॉय भी फील कर लिया. डू यू थिंक दैट लेटर विल बी डिलीवर्ड? Do you think? How will it be delivered? Only with that stamp. So gratitude is that stamp on your postcard. जब तक आप उसके लिए ग्रेटफुल फील नहीं करोगे, जब तक वो राइट डिलीवरी एड्रेस डालने के बाद भी वो डिलीवरी एड्रेस पे नहीं पहुंचेगा. सो ये यहाँ पूरा होता है आपका लव, पीस, जॉय एंड ग्रेटिट्यूड. दैट्स द प्रोसेस वी नीड टू फॉलो. एंड दैट्स व्हाई सीक्रेट, रॉन्डा बर्न की सारी किताबें हमें उसी प्रोसेस के साथ ले जाती है. पहले वो हमें सिखाती है कि पीस एंड जॉयफुल कैसे, पहले तो अट्रैक्ट करना सिखाती है सीक्रेट के रूप में. उसके बाद वो हमें पावर पे ले जाती है, जहाँ पावर में यू विल एक्चुअली फील द लव, पीस एंड जॉय. लिटरली यू विल फील द फीलिंग फ्रीक्वेंसीज. एंड द मैजिक इज ऑल अबाउट ग्रेटिट्यूड, जिसमें आपको बहुत सारे तरीके सिखाए जाते हैं कैसे हमें ग्रेटिट्यूड को प्रैक्टिस करना है. ग्रेटिट्यूड इज जस्ट नॉट अ सिंपल वर्ड ऑफ थैंक यू. मतलब हमें लगता है कि हमने थैंक यू बोल दिया सब कुछ हो गया. तो थैंक यू एक बहुत छोटा सा वर्ड है. इट्स लाइक सेइंग गुड मॉर्निंग. यू नो, हम सुबह उठते हैं, सब लोगों को आते चलते गुड मॉर्निंग बोल देते हैं. मुझे तो लगता है वो गुड मॉर्निंग में कोई वैल्यू ही नहीं है. यू नो द रीजन वाई? बिकॉज इट्स सो मच कंडीशनड इन आवर माइंड्स कि वो उठना है, गुड मॉर्निंग बोलना है, वो फीलिंग ही नहीं आती है गुड मॉर्निंग की. सो अगर आपने उसको चेंज करके बोला किसी को, वार्म मॉर्निंग, हेल्दी मॉर्निंग, हैप्पी मॉर्निंग, आपने एक वर्ड भी चेंज कर दिया ना, वो सामने वाला रुक के एक बार देखेगा और सुनेगा, तो आपने भी फील किया और आपने उसको भी फील कराया. तो इट्स लाइक दैट, यू नो, कि आप बेसिक चीजें जो कंडीशनिंग है उसको रिकंडीशन करोगे तो अपने आप नई सोच आएगी. और नई सोच के, बिकॉज चेंज इज एवरीथिंग, change is the only constant of life. So it teaches you in the journey how to change, how to recondition, how to unlearn and how to relearn, so that learning happens eventually. तो हम सबको अभी इस एज में आके ये सीखना है कि अनलर्न कैसे करना है. लर्निंग अभी तक हो गई है, अब अनलर्न करना सीखना है बहुत सारी चीजें. दैट्स व्हाट आई थिंक द सीक्रेट आल्सो टीचेस दैट. तो जो आप ओकेजनली बैठ के अपना मी टाइम निकाल के, सेल्फ टाइम निकाल के ये एक्टिविटी करेंगे, आपको बहुत बार समझ में आएगा कि हम क्या कर रहे हैं गलत, और आप उसको चेंज करोगे, आप अपने आप लव फ्रीक्वेंसी और जॉय फ्रीक्वेंसी में आ जाओगे. यस शांतनु, दैट वाज योर शिवानी, दैट वाज योर क्वेश्चन, राइट? कि आप उस फ्रीक्वेंसी में कैसे जाओगे. उस फ्रीक्वेंसी में जाने का सबसे बेस ये है कि पता होना चाहिए मुझे क्या चाहिए, तभी तो मैं उसमें लव पोर कर पाऊंगी. द फर्स्ट स्टेप, एंड देन वील बिगिन विद द स्टेप्स अहेड. How do you maintain in that frequency? मतलब आप एक बार पहुंच गए, मतलब आस्क हो गया, बिलीफ हो गया, जब तक वो चीज नहीं मिलती ना तब तक एंजाइटी होती है, पता नहीं मिलेगी नहीं मिलेगी, वो डाउट आ जाता है. क्योंकि वो डाउट इसलिए आता है क्योंकि हम कभी कभी बहुत ग्रीडी हो जाते हैं और बड़ी चीजें मांगने लग जाते हैं एकदम से. अगर हम छोटी छोटी चीजों से शुरुआत करें, एक कप चाय से ही शुरुआत करके देख ले, शायद कि आज हमने सोचा कि मुझे चाय पीनी है, आज हमने सोचा मुझे केक खानी, और हमें एक्चुअली मिल जाए, तो आपका बिलीव बढ़ने लग जाएगा. एकदम से बड़े पे ना जाके अगर हम छोटे से स्टार्ट करेंगे तो हमारा फेथ बनता है. एंड ऑल्सो वन मोर रीजन इज, दैट्स व्हाई आई डू, यू नो, जब हम सीक्रेट को पढ़ते हैं, अकेले पढ़ते हैं ना, तो वो फेथ बनाना बहुत मुश्किल है. बिकॉज हमें लगता है कि हम, यू नो, जब तक हमें मिला ही नहीं हम कैसे फील करें. जब हम ग्रुप सेशंस करते, दैट वाज वन ऑफ द मोटिव्स वेयर आई स्टार्टेड टेकिंग ग्रुप हीलिंग सेशंस. इसमें क्या होता है कि जब हम ग्रुप हीलिंग सेशंस करते हैं तो शायद अनिला जी ने एक कप कॉफी अट्रैक्ट करी, शायद महाश्वेता ने एक गाना अट्रैक्ट किया, शायद शिवानी ने एक केक अट्रैक्ट करी, और जब वो आके अपने अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करते हैं, हमें लगता है हाँ इसके साथ ऐसा हुआ, मुझे भी ट्राई करना चाहिए. तो जब हम लोगों के एक्सपीरियंसेस सुनते हैं, एक्सचेंज ऑफ इन्फॉर्मेशन होती है, ऑटोमेटिकली बिलीफ बढ़ने लग जाता है. और जब आपका बिलीफ एक बार बढ़ गया, फिर आप खुद पे ट्राई करोगे, फिर बिलीफ डबल हो गया, ऐसे 10 टाइम्स बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है. So then the receiving frequency automatically comes to you. The very important point over here is कि डाउट सबको आता है. ऐसा नहीं है कि मैं हमेशा, यू नो, हाई फ्रीक्वेंसी में रहती हूँ कि बहुत, यू नो, ऑल द टाइम कि मुझे ये मिल ही जाएगा. नहीं, डिप इन द फ्रीक्वेंसी इज अ वेरी नॉर्मल कोर्स ऑफ लाइफ. अगर वो हार्ट रेट हमारा, हम हॉस्पिटल जाके वो हार्ट रेट फ्लैट हो जाएगा
तो क्या होगा? वी आर नो मोर, वी आर नॉट लिविंग एनी मोर. सो दैट कर्व इज नीडेड फॉर ऑल ऑफ अस. हमारी लाइफ में भी वो कर्व नीडेड है. एंजॉय इट. द फर्स्ट थिंग आई स्टार्टेड ऑफ इज सेइंग दैट कभी कभी यूनिवर्स हमें वो चीज देने के लिए वो टर्बुलेंट जोन से गुजरवाती है. करेक्ट? तो एंजॉय द टर्बुलेंस ऑल्सो. दैट्स द ब्यूटी ऑफ मैनिफेस्टेशन. इफ यू thoroughly want something, you शिद्दत से आपको वो चीज चाहिए, तो आपको वो टर्बुलेंस भी फेस करना पड़ेगा. And that is the way of life. Yes, Shivani. मैम टर्बुलेंस फेस में आ गए, देन हाउ डू वी गेट बैक टू द ओरिजिनल वन, आवर फेस ऑफ हैप्पीनेस एंड ग्रेटिट्यूड? आई मीन उसमें तो बहुत नेगेटिविटी आ गई, सैड हो गए, दुखी हो गए, मतलब ये याद रखिए कि आपकी एक कंप्लेन पे आपको 10 ब्लेसिंग सोचनी पड़ेगी. नहीं तो आप ये पता, सिर्फ एक लाइन पता करना है आपको, सिर्फ ये लाइन ध्यान रखना है कि इंटेंशन क्रिएट्स इंटेंसिटी. दैट्स माय वेरी फेवरेट लाइन. अगर ये लाइन आप बार बार याद कर लोगे, मैं तो बोलती हूँ कि उस लाइन को ना कहीं पे 3 वर्ड्स ही है, उसको लिख के जगह जगह लगा दो ताकि वो बार बार आपको याद दिलाते रहे कि इंटेंशन क्रिएट्स इंटेंसिटी. जैसा आप सोचोगे वैसा आप पाओगे. तो अगर आप उस नेगेटिव फ्रीक्वेंसी में जा रहे हो और आप नेगेटिव थॉट सोच रहे हो, तो आप सोचो कि आप एक नहीं, आप 100 इंसिडेंसेस अट्रैक्ट कर रहे हो आपके फ्यूचर और प्रेजेंट को मिला के. तो आप अपने आप ही वो थॉट चेंज कर दोगे. दैट्स हाउ यू शिफ्ट. When you know that you are bringing in more trouble by your own causes, not by other people, and you cannot blame other people because you have attracted it, automatically आप वो thought change कर दोगे and वो frequency आएगी, वो dip आएगा और आपने उसको change कर दिया. I told you 100 negative thoughts replaced with 1 positive thought is enough. That's all you need to do. आपको वो recovery rate faster हो जाएगा. So आज की तारीख में भी मेरे साथ भी ऐसा होता है कि वो dip आता है, but वो dip की recovery faster है compared to what I was before or what everybody is right now, you know. तो वो frequency से निकलना बहुत easy है. ये याद रखना, एक complaint is equal to 10 blessings. अगर आपने एक बार complaint किया है तो आपको अपने दिमाग में 10 और blessings सोचनी है. Yes. Okay. Yeah. Thank you. Yes, Anila ji. Yes. Sorry. Pooja, इतना बहुत अच्छा लग रहा है and seeing your conviction, I'm really liking it. You have answers to all our questions, like all these questions we had in our mind. और मेरे को जो लगता है डाउट, यू नो, हम लोग डाउट बहुत करते हैं. हम लोग एक तरफ बोलते हैं यार मुझे पिकनिक जाना है, और दूसरी तरफ बोलते हैं नहीं, घर से तो परमिशन ही नहीं मिलेगा, अलाउ नहीं करेगा. सो यू नो, आई थिंक you can talk a little on this doubt, and I would also like you to share a little on law of attraction. Yes, I'll do that. Over to you. Okay. Thank you so much, Anila ji. So doubts, again मैं यही बताऊंगी कि doubts आना बहुत common है. तो it takes practice to not get those doubts again. छोटी छोटी चीजों से जब हम अट्रैक्शन चालू करते हैं तो अपने आप वो डाउट्स कम होते जाते हैं. एंड डाउट्स का ऐसा है कि जब आपकी, जैसे आपने बोला कि आपको पिकनिक जाना है, बट आपके मन में सोच लिया कि वो तो अलाउ ही नहीं करेगा, तो आपने एक वांट दिया यूनिवर्स को कि मुझे जाना है, और वैसे ही आपने अपने वांट को कॉन्ट्रडिक्ट कर दिया कि वो तो मुझे परमिशन नहीं देंगे. तो आपने यूनिवर्स को कंफ्यूज कर दिया है एक थॉट से और एक वर्ड से. दिमाग में कुछ और है, वर्ड्स में कुछ और है, और एक्शन तो कुछ और ही कर रहे, पूछ ही नहीं रहे, ये सोच के कि परमिशन नहीं मिलेगी, आप जाके परमिशन ले भी नहीं रहे. तो आपके थॉट्स अलग है, वर्ड्स अलग है, एक्शन अलग है. तीनों चीजों में बहुत डिस्टेंस है और बहुत कॉन्ट्रडिक्शन है. तो ये कॉन्ट्रडिक्शन जब आ गया तो फिर वो चीज कभी अचीव हो ही नहीं पाएगी. यूनिवर्स इतना कंफ्यूज कर देती है, हो जाती है खुद भी, कि वो आपको भी कंफ्यूज कर देती है, और फिर वो नेगेटिव फ्रीक्वेंसी में इतना डिप हो जाते हैं कि हम बाहर नहीं निकल पाते. सो द आइडिया हियर इज हाउ टू गेट ओवर द डाउट्स is to immediately see if your thoughts, words and action are aligned. Check on your brain. जैसे आपको लगेगा कि यार मैं सोच कुछ रही हूँ, हुए कुछ रही हूँ, कुछ गलत, you know, it's not going to happen. So immediately change it. Either अपने thoughts को change कर दो या अपने words को change कर दो, या तो ये believe ही कर लो कि मुझे permission नहीं मिलेगी तो मैं सोचना ही छोड़ देती हूँ, या फिर ये मान लो कि मैंने सोच लिया तो मिल ही जाएगा किसी ना किसी रूप में. Either you move your words to your thoughts or either you move your thoughts to your words. It's your case. You have to decide that. कि आपकी शिद्दत कितनी है, वो चीज आपको कितनी क्रेविंग है उस पर्टिकुलर चीज की, उस पिकनिक पे जाने की. आप जाना चाहते ही हो विदाउट एनी रीजन, और यू आर ओके टू नॉट गो. अकॉर्डिंगली यू शिफ्ट. सो ये दिमाग में सिर्फ कुछ वर्ड्स है जो आपको याद रखने हैं. वन इज थॉट्स बिकम थिंग्स, वन इज थॉट्स हाइफन वर्ड्स हाइफन एक्शन. ये 3 वर्ड्स है अगेन. अनदर सेंटेंस इज इंटेंशन क्रिएट्स इंटेंसिटी. ये ऐसे कुछ 3 शब्दों के सेंटेंसेस हैं जो अगर हमने दिमाग में लाइक फीड कर लिए और बार बार उसको सोच लिया तो we'll come back on that frequency. वो डाउट चले जाएगा. Is that okay? Okay.
So law of yes, Gaurav ji, आप Yeah, कुछ बोल रहे हैं? I just like to say, add on one thing. So Yes. what you're saying, it's like ask, and then you believe, and then you And you receive. receive. Yes. So when you ask, you have the clarity in the mind that what you're asking for. That's why we do the don't want list. हम 21 दिन में 11 दिन तो ये don't want list ही चलाते हैं, इसी को चेंजेस करते रहते हैं, इसी को समझते रहते हैं, इसमें और चीजें एडिशन करते रहते हैं, इसमें ग्रेटिट्यूड डालते हैं, इसमें खुशी डालते हैं, इसमें लव डालते हैं, बहुत सारी चीजें डालते हैं हम इस लव इस वांट लिस्ट में। जब जाके हम उस फ्रीक्वेंसी में आ पाते हैं कि हम अब पूछ सकते हैं, हम मांग सकते हैं। So it's like when you're asking, if you don't have the clarity, how will you ask? You know something, I was telling this to Anila, this is the month of June and we have already completed half the year of 2022. Absolutely. And another half of the year is left. So this is high time that we should offer gratitude to the times that we have, passed, completed, and putting up an intention of what are the things to be achieved in another 6 months. So, and we have had a, before you came in to hold a workshop over here, I and Anila both, we had thought about having a law of attraction workshop at the You attracted it. That's what I say. In fact, in all of my classes that I do, I always say, when I ask students, how did you come to the class? The very answer that I get is, मेरे पास बुक बहुत सालों से पढ़ी थी, मैंने बुक को 10 बार पढ़ लिया, लेकिन वो मेरे बेड साइड पे ही पढ़ी थी, मैं आज तक समझ ही नहीं पाई. या I met somebody in the pool side and she was like, I was looking for this, कि somebody कोई मुझे सिखा दे बुक को पढ़ाना, and then I saw you in front of me. So this is what law of attraction only takes you there. If you seek something, you get it. तो अगर आप कुछ भी चीज सीख कर रहे हो, वो आपके सामने आके खड़ी हो जाएगी. अब आपको ये देखना है कि आपके सामने अपॉर्चुनिटी आई है, आप उसके डोर्स खोल रहे हो या नहीं खोल रहे हो. That knock is always there. You have to just open it. So yeah. Then see, Pooja, one thing I would really like to say that इंटेलिजेंट से इंटेलिजेंट लोग, पॉजिटिव से पॉजिटिव लोगों को भी डाउट्स होता है, एंड वी डू क्रिएट एनर्जी ब्लॉकेजेस, ओके, टू दैट वी आर नॉट बी एबल टू रिसीव व्हाट्स कमिंग. तो ये हमें पता कैसे चलेगा कि हम खुद ही एनर्जी ब्लॉकेज क्रिएट कर रहे हैं? ये कैसे पता चलेगा? बिकॉज द कॉन्शियस माइंड विल से ना कि हाँ, मैंने लॉजिकली तो हम लोग ठीक ही बोल रहे हैं, लॉजिक तो हमेशा फाइट बैक करता ही है ना. आपके तीनों माइंड्स में अलाइनमेंट भी जरूरी है. जैसे थॉट्स, वर्ड्स एंड एक्शन में अलाइनमेंट जरूरी है, वैसे आपके सबकॉन्शियस माइंड, कॉन्शियस माइंड और अनकॉन्शियस माइंड, ये तीनों माइंड भी ट्यून्ड होने चाहिए. और वो ट्यूनिंग आपको आ जाएगी, प्रैक्टिस से आने लग जाएगी, आपको समझ में आने लग जाएगा कि आप ही एनर्जी ब्लॉकेज करो. इट विल जस्ट कम टू यू. यू हैव टू गेट इनटू दैट प्रैक्टिस जोन. द मोमेंट यू गेट इनटू योर प्रैक्टिस जोन, एंड जब आप हाई फ्रीक्वेंसी ऑफ ग्रेटिट्यूड में रहोगे, आई थिंक इट वर्क्स वेरी वेल विद द हाई फ्रीक्वेंसी ऑफ ग्रेटिट्यूड. आपको समझ में आने लग जाएगा कि कहाँ गलती है. और अगर आपने लॉ ऑफ अट्रैक्शन को एक्चुअली पूरी तरह से समझ लिया है, देन यू विल नो दैट व्हाटएवर इज कमिंग टू यू इज अट्रैक्टेड बाय यू. यू आर द क्रिएटर ऑफ योर ओन डेस्टिनी. तो अगर कोई भी चीज गलत भी हो रही है, वो मैं ही उसको अट्रैक्ट कर रही हूँ, मैं ही अगर ब्लॉक कर रही हूँ. कोई चीज सही हो रही है तो उसके लिए भी मैं ही रिस्पॉन्सिबल हूँ. दैट ब्लेम गेम विल स्टॉप ऑटोमेटिकली. So that's how you recognize, by knowing that everything is a result of what you do. Nothing is attracted by somebody else in your life. कोई रिलेशनशिप आपकी खराब हुई है तो वो भी इसका कारण भी आप ही हो. आपकी लाइफ में कोई चीज आनी थी, वो रुक गई है, उसका कारण भी आप ही हो कहीं ना कहीं. अगर हमें ये समझ में आने लग जाए that we are responsible for everything that we do, nobody else is responsible, I think that's enough. That will make you understand that you are the blockage, and it will make you heal that. So there are ways to heal those blockages also. Gratitude gives you the ways to heal those blockages, and you literally get out of it. You have to do nothing. Just count your blessings immensely, like for every little thing. इतनी छोटी सी बात है कि आज हमारे पास इंटरनेट है, और उस इंटरनेट से आप लोग म्यूजिक वेरांडा उस इंटरनेट के कारण स्टार्ट हुआ है. Am I right? Yes or no? म्यूजिक वेरांडा इसीलिए स्टार्ट हुआ है कि आप लोग क्वारंटाइन में थे. क्वारंटाइन में क्यों थे? बिकॉज ऑफ कोविड. तो जो लोग कोविड को इतना कोसते हैं, आपको तो उसके लिए you should be thankful and blessed that कोविड आया तो हमें ये मौका मिला, ये अपॉर्चुनिटी मिली एक स्टार्टअप के लिए. People don't want to see that. The moment you shift and start looking at that idea, that कि ये चीज है, इतनी छोटी सी चीज है, बट ये कितना मायने रखती है मेरी लाइफ में. So when you start counting on all of those things, you will automatically understand that जो भी छोटी छोटी चीजें गड़बड़ हो रही है उसकी, I am not counting my blessings for that.
that frequency, you know, that magic teaches you that. Pooja, I'd love to know more about like what all or maybe few of the things you have manifested, which were the major things, just to get inspired. I have like I said, as a 6-year-old, you know, I wanted to live in a bungalow and have a garden and have you know, sip and have tea. So that's one thing that I attracted. It took me so many years, from 6-year-old to 17-year-old. I got married in 18. So yeah, it took me almost 11, 12 years to get that manifestation done, but I was able to do it. I got married in a house which had a huge bungalow, which had the exact same garden that I imagined, and I manifested. So I'll tell you a very simple thing. When I was very just 17 when my father came to Indore, and he said that you know, he went to see the boy and see the house and everything, and then he came home and I asked him, so kaisa laga sab kuch? He's like, baki sab chhod, tera dream house mil gaya. Those were the words that my father said. You know, tera dream house mil gaya. And I was like, papa kuch nahi dekhna, haan kar do. You know, that's how spontaneous I was, and that's how spontaneous he was. So one of my biggest manifestation was my dream house. Okay, one of my biggest manifestation was, again, so as a child, as when I was in the 10th grade around, I used to read Madras Plus a lot. इकोनॉमिक टाइम्स का सप्लीमेंट्री वर्जन आता है चेन्नई के लिए. इट यूज्ड टू बी मद्रास प्लस. तो जब मैं पेपर पढ़ रही थी, आई जस्ट यू नो फ्लिप थ्रू एंड आई सॉ सम इंटरव्यूज एंड ऑल, आई वाज लाइक, आई विश, यू नो, थॉट आया दिमाग में, आई विश कि मेरा भी इंटरव्यू छपे कभी पेपर में. इट वाज जस्ट अ थॉट. एंड देन आई स्टार्टेड थिंकिंग, यू नो, आई एम इन द 10th ग्रेड, मेरा इंटरव्यू अगर छपेगा तो मुझे कैसे, यू नो, व्हाट शुड आई डू कि मेरा इंटरव्यू आए. तो जब मैं 10th ग्रेड में हूँ तो बोर्ड्स इज द ओनली वे. So boards में I started manifesting a state rank for myself, and literally I'm telling you, this is like a dream come true. I got a state rank in Hindi. In Hindi I got a state rank in my 10th grade, and when the results came, मैं 2 घंटे तक लाइन में खड़ी रही वहां जाके रिजल्ट्स के लिए. रिजल्ट बहुत देर लगा रहे थे, मैं इरिटेट होके घर आ गई अपने, और मैंने अपनी फ्रेंड को बोल दिया कि जब रिजल्ट आएगा मुझे बुला ले. So she actually, after 1 hour, she came home and she rang the bell and she's like, Pooja, come, the newspaper, the reporters are waiting for you in the school. I was like, what? Newspapers are waiting for me, reporters are waiting for me. And I had forgotten that my entire state rank manifestation was actually for the interview that was to become. And you won't believe it, the interviewer, I remember the name of the lady also. Her name was Akhila Krishnamurthy, and she was standing there when I went inside the school, and she said, we are from Economic Times and in Madras Plus we want to give an interview. And my photo and my interview came in the Madras Plus. Then my name came in the Hindu newspaper. So this was one of my manifestations. I always wanted a branded watch. At that time, I didn't have a branded watch. So like a good watch. So the moment my results came, उसी दिन जब मैं घर आई after that reporters incident, my grandfather gave my sister, my cousin sister, 1,500 rupees and said, इसको Titan पे जाके जो घड़ी इसको पसंद है वो दिला देना. So it just came to me. I still hold that watch very close to my heart. ऐसे छोटी छोटी बड़ी बड़ी चीजें बहुत सारी, you know, before my marriage, after my marriage, all of those things just kept coming to me. जब तक मैंने सीक्रेट नहीं पढ़ी थी, जब तक मुझे आइडिया भी नहीं था कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन कुछ होता है, बट when I read the secret and I read every bit of the secret, I was like, all of this in detail I have been doing it. Okay, let's come to the marriage part. If I have to say about the marriage, there were 5 instances where first मैं गई थी इंदौर देखने के लिए, but उन्होंने हाँ नहीं भरी. There was no yes or no. It took 1 year for them to say yes. So when I come back, my mothers, you know, waited for 4-5 months to get a yes from them. They didn't say yes. My mom said that अब मैं Chennai में, you know, I'll start looking out for you because it's done. I want to get you married when you're 18. That was my mother's thing. And I was like, wait, you know, I know I'll get married here. मतलब मुझे कुछ आइडिया नहीं, ना मैंने किस इंसान से बात करी है, ना मेरे पास कॉन्टैक्ट नंबर है, मुझे कुछ भी नहीं पता कि वो आएगा नहीं आएगा. But I just said it with that conviction that नहीं, मेरी शादी तो यहीं होगी, you wait. And then my mom was like, how are you so confident? I said, मुझे नहीं पता, मुझे तो confidence है कि मेरी शादी यहीं होगी, you wait. I just said it to her, and then I started writing it out, and I started affirming, and I started manifesting in all possible ways. My mother gave me a due date. कि February 20th you met, and I'm giving you date till February 20th of next year. 1 year दिया था पूरा. जब हमारी बात हुई थी, जब 6 महीने बचे थे, and Feb 9 they came and we got engaged. And this happened with 5 blockages. ऐसा नहीं है कि ऐसे ही हो गया. 5 times they made a plan, they made the tickets. 10 लोग उनकी फैमिली से 5वीं बार तक उनके टिकट्स कैंसिल हो गए. They didn't come, and they landed up at a time, and I manifested them not coming also out of those 2 events. एक बार मुझे बहुत सारी, you know, boils हो गए थे चेहरे पर, वो आएंगे और मुझे नहीं पसंद करेंगे. So you know, I was writing it and manifesting कि ये ट्रिप कैंसिल हो जाए, और वो ट्रिप कैंसिल हो गया.
3 बार उनकी तरफ से हुआ, 2 बार मेरी तरफ से हुआ. And when I was literally, then later on when I was very sick, they landed up on that day only. But I was like, ab jo bhi ho, they just like me the way I am. And it happened and we got engaged. Everything went. So the entire idea is that I manifested myself into the marriage. Somehow I think I'm manifesting myself out of it also. So yeah, it's a huge journey for me from where I was, from what I wanted. But I have been achieving everything that I've ever wanted time to time. All I've understood that is you have to be in the blessing frequency where you really have to feel blessed every single day when you wake up, that you've achieved this. And you can feel blessed only when you know that you have done this. When जब चीजें मिल जाती है हमें तो वो ब्लेसिंग नहीं आती है. जब हमें लगता है कि ये चीजों पे हमने मेहनत करी है तो आई थिंक वी फील ब्लेस्ड. दैट्स वेरी पॉसिबल लाइक दैट. ऐसे बहुत सारी चीजें हैं गौरव जी. Thank you for sharing. Yeah. In fact, I would like, if we have time, I would like to share beautiful. So one more I think authenticity Authenticity Yes, is something that so that's page turner. It's like an open page also. My life is like an open book. I just like to share what I feel, and that's how I do my classes also. I just share whatever is, real, because I think that's what is missing. One thing that Secret really taught me was self-love. Literally, when you start loving yourself, because जरूरी नहीं है कि हमें वो प्यार सब लोगों से मिले, but जब आप खुद को प्यार करना सीख लेते हो, which is very important. Again, most of us don't know how to love ourselves. तो जब आप सेल्फ लव करना सीख लेते हो, आप वो लव फ्रीक्वेंसी में हमेशा रहते हो. ठीक है, बिकॉज बहुत लोग बोलते हैं कि मैं कैसे लव फ्रीक्वेंसी में रहूं, कोई है ही नहीं जो मुझे प्यार करे, सब मुझसे नफरत करते हैं, या वो मुझे डांटते रहते हैं, या वो मुझे चिल्लाते रहते हैं, मैं कैसे लव फ्रीक्वेंसी में रहूं. तो लव फ्रीक्वेंसी डजंट मीन दैट you keep finding love in other people. You are your own person too, so you need to start finding love in yourself. So I think that has also got me there, that when you start becoming self-dependent on these little things, and that creates wonders, that manifestation frequency gets very higher. Then you just have to say it, and the genie says tathastu. You get it. Literally, whatever you want, you get it. Yes, I manifested my health also, by the way, Gauravji. I transformed from 87 kgs to 49 kgs. Wow. And yes, I manifested myself in the exact same way that I wanted myself. I was 49 kgs before my wedding. And when I started my journey of transformation, I manifested 49 kgs for me. And I went to 47. And then I came to 49 and I got stuck. And then when people kept telling me, 55 kgs ho jana chahiye, bahut patle ho gaye ho, I kept saying, nahi, mujhe 49 hi chahiye. I stayed. Till the time I wanted it, I stayed at 49. Then when I realized that, no, it's okay to give in now, today I'm at 55 kgs. What the group manifested for me, and only when I gave yes to it, when I was okay with it. So again, this is an example that when everybody around you is telling you something which you don't want it will not happen for you unless you want it to happen. So don't say that I don't want it. I never said कि मुझे 55 kgs नहीं चाहिए. मैं हमेशा ये बोलती थी, जब भी मुझे कोई बोलता था कि नहीं, you should put on some weight, you become too thin. I was like, I like myself like this, and this is how I've always wanted. I worked hard for it. I really want to stay at 49 kgs, and I will stay at 49. This is what my sentence used to be. When I wanted to put on weight, I start changing my sentence, and that's when it happened. So this is also an example where how much ever people want things for you, they cannot make it happen for you. Unless you want it or you don't want it, either of the case. Understand the importance of don't want and want. Wow, lovely, very nice. How authentic, Pooja. There are so many questions मेरे दिमाग में है, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा पूछूं कि नहीं पूछूं. आप बिल्कुल पूछिए, बिल्कुल. I'm sure everybody has a question, but we do not have the courage to ask. Please ask. Please ask whatever you want to ask. So, yes, one by one. Yeah. Meera, I just want to ask a quick question because now otherwise मैं भूल जाऊंगी. The thing is, यही तो हमें change करना है. Remember to remember. That's your sentence today. Write it down in a paper and put it somewhere. Remember to remember. That's it. Just 2 words. इसमें एक 2 डाल देना बीच में. Remember to remember. जब हम बोलते हैं ना बार-बार मैं भूल जाऊंगी, we can change that sentence that I will remember to remember it later. मिस हो जाएगा दिमाग से, ऐसे भी हम कहते हैं. हाँ, तो ये नहीं बोलना. Because we say that and it actually happens. Yes. So thoughts become things. छोटी चीजें हैं. जब यही होता है, जब हम 21 दिन तक ये बुक को रीड करते हैं ना, अगर आपने बुक को 2 दिन में रीड करके छोड़ दिया, आपको समझ में तो आ जाएगा, बट आप उसको अमल में नहीं ला पाओगे.
जब आप लंबे टाइम तक उसको पढ़ोगे, और मैं बार बार टोकूंगी चीजों के लिए, बार बार आप शेयरिंग करोगे, डाउट्स आएंगे, दिस इज व्हाट वी डू बेसिकली, वी गेट पीपल इन दैट फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रैक्टिसिंग, ताकि वो सेटल हो जाए, वो दिमाग में बल जाए, वो रग रग में चले जाए कि अब ये ऐसे ही बोलना है, तब तक हम उस पर प्रैक्टिस करते हैं. Acha Pooja, one thing also that happens, which I have actually seen it in the past, it has happened with me, that, you know, constantly I am offering gratitude and affirmations that I am very happy, I am grateful for whatever thing that I have in my life, say a job, and you know, deep inside I know that I am being less paid, you know, I am being underpaid, but at this point in time, within the given scenario, this job is the best thing that I have, because it pays my certain bills, and it gives me a certain amount of lifestyle. But you know, in spite of offering gratitude, nothing concrete is happening with that job. I mean, in the sense that, you know, your responsibilities are being taken away, and you're like working like crazy to, you know, keep the things together, but it is still falling apart. So I had read it in another book, not The Secret, of course. I am a great follower of, you know, Yogananda Maharaj. He said that, you know, when things are not meant to be happening, no matter how much gratitude you offer, no matter how much effort you make, things tend to fall apart. That's the best part, that, you know, when the things are falling apart, after putting all your hard work, let it be. Because I'll tell you, that is what always better. Yes, if you could throw a little bit of light on that. I'll tell you. Always in my manifestation, I always put a sentence in the end of it. Whatever you are attracting, if it be in my highest good, be attracted to me. That's it. This is a surrender statement. जब भी आप कुछ मैनिफेस्ट करते हो और अगर वो आपके लिए मेंट टू बी नहीं है, आपके हायर गुड के लिए अच्छा नहीं है, अगर हम भगवान के आगे सरेंडर कर देते कि अब हमने ये कर दिया, अब तू नैया पार करा दे, ऐसे ही हम भगवान के आगे जाके बोलते हैं ना सब लोग, दैट इज द सेम थिंग यू डू विद द यूनिवर्स, कि मेरा काम हो गया है, मुझे ये चाहिए, मैंने आपको बता दिया है, यू नो एवरीथिंग दैट आई वांट, नाउ व्हाटएवर इज द लीस्ट रेजिस्टेंस वे यू टेक मी थ्रू इट, और इफ इट इज मेंट टू बी यू टेक मी थ्रू, इफ इट्स फॉर माय हाईएस्ट गुड इट हैपेंस टू मी, इफ इट इज नॉट फॉर माय हाईएस्ट गुड प्लीज डोंट लेट इट कम टू मी. दैट्स व्हाई समटाइम्स थिंग्स आर नॉट हैपनिंग टू मी इन द राइट टाइम ऑफ लाइफ. जब वो टाइम सही, जब हम बोलते हैं ना कि वो वेट, जब आपका टाइम सही होगा तब वो चीजें आ जाएंगी. आज मैंगो सीड उगाइए, आज ही मैंगो पेड़ बन जाए जरूरी नहीं है. हमें वो पेशेंस, टाइम, एफर्ट, इसका मतलब नहीं है कि आप वो मैंगो पेड़ को कम प्यार करने लग जाओगे, आप उसको प्यार उतना ही करोगे. फॉरगेट द मैंगो पेड़, छोटा बच्चा है, वो एकदम से तो अडल्ट नहीं हो जाता है 18 साल का, लेकिन वो अडल्ट नहीं हुआ इसलिए हम उसको प्यार नहीं करेंगे, इसलिए हम उसको जॉयफुल फील नहीं करेंगे. नहीं, हम ऐसे ही फील करेंगे कि हमें वो लग रहा है कि वो हमें वो दे रहा है. वो 18 साल का बच्चा जब हो जाएगा, जब वो हमारा सपोर्ट कर रहा है, इसीलिए हम उतने ही प्यार से आज उसकी इतनी शिद्दत से उसकी जर्नी को पूरा कर रहे हैं. राइट और रॉन्ग? करेक्ट. So that's how you need to go about it. Some things are really not meant to be true, that I truly am an ardent follower of this statement, meant to be. So like I said, I manifested myself into the marriage and I am manifesting myself out of the marriage. तो बहुत सारे लोग ऐसा हो सकता है बोलने कि आपने मैनिफेस्ट किया तो आपने शादी की क्यों, या आपको मुझे रिग्रेट नहीं है कहीं भी. That was my journey probably to get where I want to be, to get maybe you know something better is awaiting me, and this was the journey that you know I had to go through it. So if it was a journey, it has to be a journey. Instead of regret, I'm very grateful today also that I went through this journey, because what I have become, the strength that I have today, it's because of this journey. So the idea is to be able to find a blessing in every little thing that you have, instead of putting a regret, and it will come very naturally to you. When you actually get into the gratitude zone, it will come very naturally to you. Also, Mahashweta, magic में एक specific chapter है जो आपको, जब भी आपको ऐसा फील होता है कि मुझे इस जॉब से बाहर निकलना है और आई वांट अ बेटर जॉब, देयर इज अ स्पेसिफिक चैप्टर कॉल्ड कॉन्सेंट्रेटेड ग्रैटिट्यूड. आप उसको लिखना चालू करोगे अपने वर्क के लिए, एंड यू रियली go through it like for a few days with all your heartfelt gratitude, you will be able to come out of that job for sure in the right time. But maybe the right time is 1 year, maybe the right time is 2 years. Pooja, yeah, that's exactly what I did, because एक ना thought आया suddenly, a spiritual download kind of thing, that ये जो इतना मेहनत मैं कर रही हूँ किसी दूसरे के लिए, उसके जेब में पैसा जा रहा है, I should do that hard work for myself. So that's the key. That's the cue. This is what I say, when universe comes knocking at your door, you have to be in the highest frequency to understand the message the universe is giving you. The universe is always providing you with signs. The fact that you're unhappy with your job, you feel you're underpaid, it's a cue that you need to start something of your own. That's when you take that cue and you work upon it. So ऐसा तो magic नहीं है.
मैजिक होता है, बट मैजिक अपने आप से नहीं होता है, मैजिक के लिए एफर्ट लगाना पड़ता है. यूनिवर्स सेज यू थिंक अबाउट इट, आई विल मेक यू पुट द एफर्ट, बट यू हैव टू एटलीस्ट ओपन द डोर कि एफर्ट कर पाओ. तो आप अपना डोर तो खोलो, अपना स्टार्टअप शुरू तो करो, उसके बाद सारा हाउस आ जाएगा, सारा वर्क हो जाएगा. माश्वेता मैम, आपने जो अभी ये Very जो simple, बात that's कही your ना, key. यही बात धीरूभाई अंबानी ने सोची थी कि मैं जो All मेहनत कर रहा the हूँ. great people. हाँ, उन्होंने भी यही सोचा था कि जो मेहनत मैं दूसरे के लिए कर रहा हूँ, मैं अपने लिए जब शुरू करूंगा तो अपने लिए करना जरूरी है. और मैं भी यही कर बात सकता- मैंने भी सोची थी. मैंने 6 हाँ. महीने पहले ही अपना स्टार्टअप स्टार्ट किया है, हैप्पी Wow. लाइफ क्लास विद पूजा. The group Wow. healing sessions that I'm doing, it's a 6-month project. For 11 years I've been teaching CA students. मतलब मैं 11 साल से CA students को ओरिएंटेशन, पर्सनल ग्रूमिंग, कम्युनिकेशन स्किल्स, ये सारी चीजें, यू नो, बुक सीक्रेट को भी इतनी बार मैंने करा चुकी हूँ. मुझे लगा मैं सबको बता रही हूँ, सबको करा रही हूँ. Actually, people need it. Why should I just restrict it to CA students and go and give a lecture there alone? I'm still continuing there, but I started off my own venture also. Like this was my thought also. That's wonderful, Pooja ma'am. But I have the same question related to this. Like to ask for something big, something good for ourselves. How do we believe in ourselves कि हम जो पूछ रहे हैं, हमको जो चाहिए वो मिलेगा? तो वो conviction हमारे खुद के लिए कैसे आएगा? खुद से प्यार करके. Okay. सिर्फ खुद से प्यार करके आएगा. प्यार नहीं है तो कन्विक्शन नहीं आएगा. कितना प्यार करते हो अपने आप को, ये चेक करो. नहीं, sometimes होता है ना कि Very कुछ चाहिए interesting. but it is like I would way pre- too big for me, ऐसा मुझे लगेगा, but still I want it. कोई भी Like- चीज बड़ी नहीं है हमारे लिए, बिकॉज यूनिवर्स इज अबंडेंट. आपके लिए शायद बड़ी हो सकती है, बट यूनिवर्स के लिए बहुत छोटी है. यूनिवर्स के पास इतना है कि वो हर किसी को अबंडेंटली प्रोवाइड कर सकती है, प्रोवाइडेड वो अबंडेंटली मांग रहे हैं. हम ही कंजूस है, हम ना मांगते हैं ना देते हैं. ये हम ही कंजूस है, यूनिवर्स नहीं है. सो दिल खोल के मांगो. जब आपको पता है कि यूनिवर्स अबंडेंट, आपको पता है कि आपके पेरेंट्स बहुत रिच है, तो दिल खोल के मांगोगे ना, मुझे गाड़ी चाहिए, मुझे बंगला चाहिए, मुझे ये चाहिए. लेकिन पता है आपके पेरेंट्स कंजूस है तो नहीं मांग पाओगे, या आपके पेरेंट्स के पास कम पैसा है तो. सो थिंक दैट द यूनिवर्स इज सो अबंडेंट कि मैं जो मांगूंगी मिलेगा. ये कन्विक्शन तो लाना पड़ेगा, और ये खुद Okay. से आएगा. ये खुद से आएगा जब आपकी सोच अपने आप बदलेगी. बाहर की दुनिया की सोच बदलेगी, अंदर की सोच बदलेगी. Excellent. I want to Lovely. add on a very interesting aspect. You know, I was Yes. employed in an IB school. Maishweta, I think Jitendu wants to ask a Jitendu. question. Okay. I'll just finish it up. You know, I used to dream of teaching foreigner students, okay, Indian classical. So that's why I was employed in an IB school. और मैं देखती थी कि वहाँ पे बड़ी अच्छी से ग्राइंडिंग होती है, मतलब कि उतना, मतलब कि जितने का काम कराते हैं, you know how organizations are. Then I gave up and I'm attracting, you know, foreigners only, and you know, online, and exactly. This So is it what has it to is. be there on your head first, I guess. Whatever you want. It, everything is in the mindset. Everything happens here. Entire see, it's your imagination that becomes your reality. जितने भी बड़े बड़े लोग हैं, जो भी reality में convert हो, जो भी invention discovery हुई है, वो सब यहाँ से ही हुई है. एक thought आया, उस thought को उन्होंने बदल दिया. अल्बर्ट आइंस्टाइन ने क्या किया? एक thought ही तो था हर किसी को. एक वो एप्पल गिरा, तो वो एप्पल गिरने से एक थॉट ही तो आया जिसको एक थियोरी में बदला गया है. इट इज ऑल अबाउट थॉट्स. Just give me a minute, I'll just be there. Just give me a minute. Jitendu, Sure. thank you for your patience. Thank you. You're next. And what a Thank wonderful you, thank session you, going thank on. Ashima, Menka, what a wonderful session Anna, going on. Thank you, Anila ji. मतलब मैं- immense gratitude to you and to Music Veranda. thank you. Seriously. Anila, thank you for Thank being you a to part God, of you our life, and thank you again for creating this beautiful veranda. We have connected with such lovely people, and this is actually our soul tribe. When you vibrate on a different frequency, you are, I mean, attract people like you only. So thank you once again. Yes. And Thank I you, personally thank feel that I And, attracted this session today, so I'm like attending it. Yes, Dipendu ji, yes. Hello, ma'am. First of all, Hi. wonderful listening to you. Thank I you. read The Secret. Jitendu, yes. Yeah. क्या हुआ? Thank you, Go Rila, ahead, ma'am. go ahead, Jitendu. So Pooja ma'am, I read the book The Secret for the first time in 2014, और मुझे बुक का आइडिया रेडिकल लगा, तो मैंने उसी को वर्बैटिम कहीं और जाके बोल दिया.
लोग मुझ पे हंसने लगे क्योंकि शायद मैं ही कन्विंस नहीं था उसके बारे में। एग्जैक्टली, मैं जब तक शायद आप नहीं खुद convince- कन्विंस नहीं हो हाँ, आप नहीं कर सकते। तो yes. बट ऑफ कोर्स मतलब पहली बार ही था, बट धीरे धीरे वो चीजें परकोलेट करती गई माइंड में दैट इट इज यूजफुल छोड़ो, इट इज मीनिंगफुल. So slowly and steadily I started understanding that. So what I want to ask is, or what I want you to elaborate on is, one, what is the difference between manifesting something and just wishful thinking? That's one. And I'll just extend this question कि कुछ manifest करने के लिए क्या visualization जरूरी है, और उस अगर है तो उसको कैसे कैसे कार्यान्वित करें? How do we achieve that visualization? How do we go about Okay. visualizing things we want to manifest? Absolutely, very good question. Visualization is the most powerful tool of manifestation. I would like to put it like that. Manifestation के बहुत सारे tools हैं, like gratitude is a tool, okay? And ये ask, believe, receive frequency, ये जो हम listing करते हैं, जो gratitude देते हैं, जो happiness feel करते हैं, self love feel करते हैं, ये सारी tools है manifestation की. इन सब tools में से सबसे priority में जो tool है, सबसे highest frequency vibrating में जो vibration में जो tool है, that is visualization process. Okay, so the entire brain, sees in images. अगर मैं आपको एक छोटी सी एक्टिविटी, हमारे पास टाइम है क्या छोटी सी और एक्टिविटी कराने का, या मैं सब बोल देती हूँ? नहीं है ना, टाइम नहीं है. We have time, let's do this. नहीं, we like to do. Yeah, we would love to do. Continue. Okay, so आपके पास पेपर पेन है ना? बस मुझे 2 मिनट एक सीनरी ड्रॉ करके बता दो. बस 2 मिनट दूंगी, एक सीनरी ड्रॉ करके बता दो. 2 मिनट में, क्विक 2 मिनट सीनरी, 2 मिनट मैगी की तरह. जिन जिन की सीनरी पूरी हो गई है, मुझे बता सकते हो आप सीनरी में क्या बनाया आपने? I am done. आप बता सकते हैं आपने क्या बनाया? जो हम बचपन में बनाते थे वही, ऊपर पहाड़, सूरज. मैं बताती हूँ 90% लोगों ने क्या बनाया होगा. एक पहाड़, एक सूरज छुपता हुआ पहाड़ में, वो आर्च शेप के बर्ड्स बनाए होंगे, तन में से रेस निकलती हुई, शायद एक रिवर स्ट्रीम बनाई होगी, एक कॉटेज बनाया होगा, एक पेड़ बनाया होगा. मोस्टली वो वैसे ही पेड़ होगा. मैंने ना आज वो नहीं बनाए, बस पक्षी नहीं बनाए जान. हाँ, और शायद एक लड़का लड़की होंगे जो एक छाता लेके, बारिश भी हो रही होगी, एक झोपड़ी बनाई है, घास होगी और फेंस भी होगा शायद. हाँ, सूरज डूब रहा है, नाव भी बनाई है. यस ट्री भी है, ट्रीज भी है, और नदी के किनारे ट्रीज भी है, कुछ पौधे भी बनाया है सबने. फसल. डिक्शनरी में सीनरी का मीनिंग क्या होता है? नहीं, हमें तो बचपन से मैंने एक लड़की बनाई है जो कि थोड़ी स्लिम है. अच्छा, वेरी गुड अनिला जी. पहले मैं लाती थी वो थोड़ी वेरी गुड, दिस इज हेल्दी होती थी, अब मैंने बनाई वो स्लिम. दिस इज सीनरी. मैंने बर्ड्स बनाए हैं और वो डॉलर से भरी हुई पोटली बनाई है. तो मैं सोच रही हूँ वो बर्ड डॉलर से भरी हुई पोटली लेके उड़ेगी कैसे? अरे आप दान कर रहे हो क्या? आई एम कॉन्ट्रडिक्टिंग. आपका क्यों है? आप दान कर रहे हो, दान करने वाले हो बहुत जल्द. थिंक पॉजिटिव. मैं ऊपर से फेंक दूंगी. नहीं, आप फ्रीक्वेंसी में जा रहे हो, गिविंग फ्रीक्वेंसी रिसीव होगा. लेट्स कम बैक टू दिस. ओके, जोक्स अपार्ट, आई थिंक या इट कम बैक टू मी. या वो है ना, वो कबूतर उड़ जा प्यार का पक्षी दिया, और फिर वो वहां से मैसेज भी लेके आएगा. Pooja, suddenly your voice has become very faint. If you could just increase the volume. Volume is full. DJ, could you see to it, please? देखो इंदौर जाना पड़ेगा उसके लिए. ठीक आ रही है? नहीं, पूजा मैम की तरफ से वॉइस कम हो गई है. आ रही है श्वेता जी.
हम लोग का आवाज आ रही है? अभी आवाज कैसे मैं और तेज नहीं आ रही है आवाज, मेरे को तो आ रही है, बहुत धीरे आ धीरे रही है आ रही लेकिन आ है। रही है। कम आ बात रही तो है। नहीं आ रही है ना, कम आ फेसबुक रही है। पे तो नहीं आएगी ना आवाज। एक मिनट, मैं अपना नेटवर्क चेंज कर देती हूँ। पूजा, योर वॉइस इज वेरी लो। हाँ, वो अपना नेटवर्क चेंज करने को कह रही हैं। हाँ तो ठीक है, हम और लोग 2 तब तक घंटे ये नहीं, 2 गाना मिनट कह रही सुनते हैं। हैं। अभी ठीक हाँ, हो तब गया? तक गाना सुनते हैं। अभी ठीक हो हाँ, गया? शांतना या शिवानी, एक मिनट वो महाश्वेता, अभी भी दीपेंद्र, स्लो है। अनिला अनिला जी, जी। एक मिनट, शी इज सेइंग समथिंग। अभी आप ठीक है आवाज? पूजा, अभी ठीक है आवाज? कम ही है अभी भी, आवाज आ तो रही है लेकिन कम आ रही है। आप वापस लॉग आप इन ना करिए। वापस या तो उस कमरे में आ जाओ जहाँ पर पहले थे। ठीक है, मैं वापस से लॉग इन करके लॉग आउट करती हूँ वापस। अनिला जी, हाँ, ये शिवानी। ये जो सीनरी मैंने बनाई, मुझे लगता है बहुत ज्यादा मैंने इसको अट्रैक्ट किया। मेरा घर सीरियसली इसी लोकेशन में है, साइड में नदी बहती है घर के किनारे, एंड आई सी टू सनसेट एवरी डे, ट्रीज है, एंड वी हैव अ बिग रोड एंड बोट राइड, एवरीथिंग। तो मुझे लगता है ये, हाँ सीरियसली, मतलब माय हाउस इज एट दिस लोकेशन राइट नाउ। पता नहीं, हमें क्या पता, हो सकता है कि आप झूठ बोल रही हैं। Maybe you are lying. आप अरे, आई एम इनवाइटिंग यू ऑल टू पुणे में आ जाओ तो देखिएगा। हम सब आएंगे आपके घर, तो बिल्कुल पता बिल्कुल चलेगा। बिल्कुल। अरे एड्रेस तो दे दो। मोस्ट वेलकम। और भी कोई फ्लैट खाली है उधर तो बताइएगा। बिल्कुल बिल्कुल। ऐसा लग रहा है टीचर गई क्लास से और बच्चे लोग बेकार की बातें करने लगे। अरे नहीं, ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं। वन थिंग मैं एक चीज बोलूंगी कि ना, जब वेरांडा शुरू भी नहीं हुआ था, उसके 1-1.5 साल पहले भी ना, मैं सोचती थी कि कितना मजा है ना, रोज रात को म्यूजिक शो में मैं जा पाऊँ, म्यूजिक सुन पाऊँ, क्रिएटिव लोगों के साथ टाइम स्पेंड कर पाऊँ। एंड देन आई यूज्ड टू थिंक ये हो ही नहीं सकता है, कैसे हो सकता है। लेकिन अब म्यूजिक वेरांडा में रोज हम लोग क्रिएटिव लोगों के साथ मिलते हैं, नए नए लोगों के साथ मिलते हैं घर बैठ के। मतलब ये कैसे हुआ ये मुझे नहीं पता है। एंड देन I am very regular with Mind Valley, और Mind Valley के जो सेशंस होते थे, मुझे लगता था काश इंडिया में भी कोई ऐसे सेशंस करवाए। और आज हम देखिए हम इस तरह का सेशन एक्चुअली कर रहे हैं। हाय पूजा। Yes, पूजा जी प्लीज कुछ बोलिए। Can you hear me clearly now? Yeah, it's much better. It's much better. Okay, thank you. So I was saying कि 90% लोग यही बनाते हैं, जो बहुत कम लोग होते हैं, जैसे अनिला जी और महाश्वेता जी ने, जिन्होंने कुछ नया बनाया है। अदरवाइज सब लोग नेचर, सीनरी को नेचर से एसोसिएट करते हैं कि सीनरी बोला है मतलब वो नेचर। वो क्यों ऐसा होता है? कैन यू टेल मी द रीजन क्यों ऐसा होता है? माइंड प्रोग्रामिंग बचपन से वही है जो हमने माइंड कंडीशनिंग। बचपन में जब हम बच्चे के स्कूल में बैठे थे, टीचर ने बोला सीनरी बनानी है, फिर टीचर ने सोचा कि ये तो बेवकूफ है, अभी छोटा है, इसको नहीं समझ में आता है कि क्या बनाना है, मैं बोर्ड पे ड्रॉ कर देती हूँ। ठीक है, तो बोर्ड पे ड्रॉ कर दिया और एज इट इज हमने इसको कॉपी पेस्ट किया। तो वो बोर्ड पे जो हमने देखा सबसे पहले, वो एक विजुअल इमेज हमारे माइंड में क्रिएट हो जाती है, और वो इमेज हमारे साथ लाइफ लॉन्ग रहती है। शायद आप 80 साल के हो जाओगे तब भी अगर आपको कोई सीनरी बनाने को बोलेगा, सबसे पहला थॉट आपके दिमाग में वही आएगा, चाहे आप वो बनाओ या नहीं बनाओ। आपके दिमाग में सबसे पहला थॉट वो विजुअल इमेज रिप्ले। दैट इज द पावर ऑफ विजुअलाइजेशन। व्हेन यू सी अ विजुअल इमेज ऑफ एनीथिंग, इट स्टेज इन योर हेड। यू नो, एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड, ये बोला गया है। बहुत सालों से हम ये सेंटेंस सुनते आ रहे हैं। आपके जो एक्शंस हैं, म्यूट कीजिए ना, किसी का अनम्यूट हो गया है। रचना जी म्यूट करिएगा। हमारे जो एक्शंस हैं वो ज्यादा तेजी से बोलते हैं हमारे वर्ड्स के कंपैरिजन में। तो जितना भी हम, जैसे हम मूवीज देखते हैं, तो हमें वो विजुअलाइजेशन एज इट इज हमारे दिमाग में बस जाता है, क्योंकि वो एज इट इज हमें दिया गया है। इमेजिन अगर आप एक बुक रीड करते हो, दिस इज व्हाट इट इज, यू नो, द पावर ऑफ डिफरेंस बिटवीन रीडिंग अ बुक एंड वाचिंग अ विजुअल। So when you read a book, you are actually associating all your 5 senses in reading a book. So whatever you are going to read, you are going to make your own visual images. और वो एक नहीं 100 तरीके की visual images create हो सकती है दिमाग में। इतना power है visualization का। One is a receiving visualization, one is you're creating a visualization. So what is better, to create a visualization or to adopt a visualization from somewhere? What is better according? Create, right? तो इसीलिए बोला जाता है मैनिफेस्टेशन में, जब आप खुद की विजुअलाइजेशन क्रिएट करते हो तो मैनिफेस्टेशन सुपर पावरफुल हो जाता है। That's wonderful. Pooja ji, I just want to be a little selfish here, and I want to ask, like, how can we use manifestation to overcome physical ailments? For example, yes, example.
I suffer from really bad knee pain. So मतलब कैंसर पेशेंट्स तक क्योर हुए हैं मैनिफेस्टेशन से, तो नी पेन तो बहुत मामूली सी बात है okay. लिटरली। मेरे पास कमर दर्द, नी पेन, ये सारे इश्यूज हुआ करते थे। एवरीथिंग इज सॉर्टेड जस्ट बिकॉज ऑफ मैनिफेस्टेशन एंड ग्रैटिट्यूड गोज अ लॉन्ग वे। आप म्यूट कर दीजिए ना किसी का, श्रुति कैन यू म्यूट? ओके, यस। सो द आइडिया इज दैट आप जब भी मैनिफेस्ट करते हैं, आप पॉजिटिव प्रेजेंट टेंस से मैनिफेस्ट करते हैं। तो अगर दीप्तेंदु जी आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि आपका नी पेन ठीक हो जाए, तो यू स्टार्ट फीलिंग ग्रेटफुल फॉर योर बॉडी फर्स्ट। यू स्टार्ट फीलिंग ग्रेटफुल फॉर योर बॉडी बिफोर यू हैड द नी पेन ऑल्सो। पास्ट में जाके भी, प्रेजेंट में रह के भी, और फ्यूचर में कैसी, जैसे अनिला जी को जो बॉडी चाहिए उन्होंने वही बॉडी ड्रॉ करती थी में। That is the power of visualization. So you draw yourself walking through, you paint yourself walking through, you imagine yourself walking comfortably, running, doing all of those things which you would have not otherwise done because of knee pain. So that is when you get in the receiving frequency. So yes, manifestation is all about being selfishly selfless only. So it's okay. You can, manifestation is completely about being selfish. So it's got to be done for you. ऐसे भी आप किसी और के लिए मैनिफेस्ट नहीं कर सकते इतना पावरफुली जितना आप खुद के लिए कर सकते हो, तो आपकी सारी एलिमेंट्स ठीक हो जाएंगे। देयर वाज अ कैंसर पेशेंट जिसको प्रॉब्लम, एंड आई फेल लाइक दिस इज द रियल स्टोरी दैट आई एम टॉकिंग अबाउट। वन ऑफ द मैनिफेस्टर्स, मतलब जो पावरफुल मैनिफेस्टर्स है, मैं उनकी स्टोरी शेयर कर रही हूँ आपसे। दैट हर मदर हैड कैंसर एंड हर मदर यूज्ड टू गो फॉर अ कीमोथेरेपी एवरी अदर टाइम। और वो कीमोथेरेपी में जाती थी, और कीमोथेरेपी में जाने से पहले बोलती थी कि मैं ठीक हूँ, और कीमोथेरेपी से आने के बाद ही बोलती थी मैं तो ठीक हूँ, आई एम तो एकदम फाइन। द डॉक्टर कॉल्स अप एंड आस्क्स, बिकॉज 2-3 दिन तक तबीयत खराब रहती है व्हेन यू आर आफ्टर कीमोथेरेपी। शी यूज्ड टू से नहीं मैं तो ठीक हूँ, मैं तो ठीक हूँ। और उसको हेडेक होता था ना, तो उसकी डॉक्टर बोलती देखो आपको हेडेक हो तो रहा है, आप कहाँ ठीक हो? नहीं मैं तो ठीक हूँ, हेडेक तो ऐसे ही हो रहा है। शी ऑलवेज यूज्ड टू से लाइक दिस, आई एम तो फाइन, नथिंग हैज हैपेंड बिकॉज ऑफ कीमोथेरेपी। So every chemotherapy of hers was so successful that even if she felt sick after this chemotherapy, she wouldn't put it to chemotherapy. She would be like, I'm okay with it. ये तो होता रहता है, ठीक है, चलता है। And literally she cured her cancer completely because of that. And she was in a very good frequency. Otherwise cancer patients are so dull. So ये true story है जो मैं आपको बता रही हूँ। मतलब this is the power that, even if you're going through something, you can change it to your feelings can behave differently. आप कैंसर बहुत बड़ी बीमारी है, लेकिन इतनी बड़ी नहीं है जितनी बड़ी हम सोच के बना देते हैं। Everybody is going through some surgery or something other. Why are we making that chemotherapy so big? So what is it we are creating over here? We are creating a bigger picture or a smaller picture of it. That's up to us. That comes out of selfish interest. Thank you so much. Thank you so much. I'm feeling the positivity. Thank you very much. Thank you. So there is also one thing that I would like to share. जब हम एक बार thank you बोलते हैं, Pooja, there is so much. आपने कुछ बोला अनिला जी, मुझे सुना ही नहीं दिया। Yeah. Pooja, thank you so much. There's so much to talk, so much to know, so much to ask, but we are running short of time now. Yeah. We've already exceeded. We thought the session is going to be 1 hour. Anila ji, we will not say we are running short of time. We shall replace it that there's always a next time. Okay. Right? Okay, right. Thank you so much. Thank you so much for correcting. Thank you so much for correcting. And I think that is what I was talking to Pooja, that we would actually want you to do a workshop for all of us, So if like I would talk to you and I would like to understand if like या तो secret का या कोई और कोई book का हम लोग एक, जैसे आप किस तरह से वर्कशॉप्स करते हैं, आप थोड़ा सा बताइए हमको। हाँ, मैं बिल्कुल बताती हूँ। या क्या कौन सी बुक्स पे करते हैं? एंड आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू आई एम अटेंडिंग your workshop very soon. Yes, over to you. Thank you so much, Anila ji. Thank you for this opportunity. First, thank you for getting me over here. It's a great vibe and I'm really loving it. And I love when questions keep pouring. So just keep the questions pouring all the time. So the second part of it is about my classes. I take group reading sessions basically. So what we do is, suppose this is a book, से अभी मेरे पास हाथ में secret है, तो हम इस secret को 21 दिन तक पढ़ेंगे। 21 days is the ideal time for creating a habit. बहुत सारे लोग हैं जिनको किताब पढ़ने की आदत नहीं है, so मैं किताब पढ़ना भी सिखाती हूँ कि कैसे पढ़ी जाती है और कैसे हैबिट बनाई जाती है। Some people want to read but they are not consistent. So 21 days का टाइम पीरियड हम इसलिए लेते हैं कि कंसिस्टेंसी भी बन जाए, तो हैबिट बन जाती है, कंसिस्टेंसी क्रिएट हो जाती है, पावर ऑफ रीडिंग समझ में आता है और ग्रुप एनर्जी मिलती है। दिस इज व्हाट वी डू। So all my book reading workshops are for 21 days except for magic. Magic is for 28 days.
बिकॉज मैजिक में बहुत सारे टास्क हैं जो हर दिन एक टास्क करते हैं हम, और वो 28 डेज तक चलते हैं. So what we do in these sessions is I do reading for Secret, for Power, for Magic. All of these 3 books are by Rhonda Byrne. The recent book that I've introduced in this month, so every month we introduce one new book. So this month I have introduced Relentless by Tim Grover. The book called Relentless by Tim Grover. It's a path-breaking book, literally. Like, it changed my life. It began my transformation. My physical and mental transformation journey began with that book. So it's a marvelous book. So these are the books that I'm currently doing. How we do these sessions are in 21 days, every day, 1 hour, only 1 hour we meet, 1 hour, 5 minutes ho jata hai kabhi kabhi. So while we are reading together, everybody gets a chance to read 2 pages each. Okay, जैसे आज 4 लोगों को चांस मिल गया, कल दूसरे 4 लोगों को चांस मिल गया. हम थोड़ा थोड़ा पढ़ते हैं और फिर वो थोड़ा थोड़ा पढ़ने के बाद उसको हम elaborate करते हैं, समझते हैं, टास्क करते हैं. So every day I give you a task that you have to perform and come. Then you give me a report of that task, and then I clear all your doubts that came up in that task. I ask you to make a sharing. Then we do group sharing basically. किसी का कुछ हो गया तो sharing करते हैं, किसी का कुछ नहीं हुआ तो sharing करते हैं. So all those doubts are being taken up by me. All the questions are being answered by me, and the right way of manifestation is being taught by me. So manifestation हर कोई YouTube वीडियो पे देख के आ जाता है, यहाँ देख लेता है, सोचते हैं हम तो manifestation कर सकते हैं. But there is a right way to do it, because otherwise things may even turn out wrong for you. So it's very important to understand the crux of it and get yourself into that zone. So that's what we do in our group reading session. Also हम journaling workshop भी कराती हूँ मैं. Journaling workshop ऐसी होती है, 11 दिन की workshop होती है, where I give a lot of prompts. You know, personal level पे मैं एक prompt share करती हूँ. हम लोग 15 मिनट का time देते हैं और सब लोग मिलके journal करते हैं उस prompt के ऊपर. Immediately जो thoughts आते हैं, फिर हम उसको group में share करते हैं. So again, we create a bond. We create an intimate bond with each other beyond anything else. So, and we get free of ourselves, and mood changes very quickly. So we do journaling workshops. Then I also do chota workshops like Dipendra what is her name? Deeptendu, sorry. Deeptendu का question था कि visualization, right? So visualization के ऊपर मेरा एक workshop है जो 2 घंटे का होता है, vision board create करना. So I do those kind of workshops also, how to create a vision board for yourself, how to declutter your life through the happiness way. ऐसे छोटे-छोटे 2-2 घंटे के workshops भी करती हूँ. So this is the whole process of my training, online training. Also, I do happy talks. So happy talks are one-on-one personal sessions, wherein जिन लोगों को group में comfortable नहीं है, वो अपने issues या जो भी situation या जो भी habit change करना चाहते हैं, या provided they just need a listening ear, I do one-on-one sessions also for them. They are called as happy talks. Wow, brilliant, brilliant, brilliant. Very nice, Pooja. बहुत अच्छा लग रहा है. And I was talking to Pooja, and in fact, I am already registering myself in a few workshops. I've already, and a few members of Chopal. So I have requested her to curate something specially for Music Veranda community. Ecosystem, जैसे Deeptendu बोलते हैं, it is an ecosystem, you know. So she is working on it, and very soon I'll share, after discussing with her, I'll share कि क्या उसके logistics हैं, क्या है, ताकि हम लोग वो attend कर सकें, because we actually want to, you know, we actually want to become as expert as you are, you know. जितना आप master हो ना, जितना convincingly आप बोलते हो, हम लोग सभी चाहते हैं, क्योंकि हमें सबको विश्वास है. We've already tasted manifestation and law of attraction, because all these miracles they keep happening in Veranda, you know. But now we really want to become experts. We really want to have our hands on it. So we'll be very happy if you can design a program specially for Music Veranda community. Absolutely, I can have a separate workshop just for you people, which is going to be an honor for me. So do let me know how many of you are interested. Thank you so much, Pooja. And any message that you have to say to us? I can read out a few poetry if you want to. Like सब लोग गाना गा रहे हैं, मेरा भी मन किया कि मैं poetry पढूं. Oh, so that's okay. You're a poet too. You're a poet too. Yes, yeah. Yes, definitely. Just give me a minute. I'll just get my book. Just give me a minute. I'll just be there. Yes. हाँ, अनिला जी, किसी को और कोई क्वेश्चन तो नहीं पूछना? हाँ,
हाँ तो हाँ मुझे तो शिवानी, ये पूछना है कि tell हाउ डू me. वी गेट टू नो हर वर्कशॉप्स, लाइक कौन कौन से सेशंस हैं और कब है, लाइक उनका वेब पेज उनका एंड कोई एवरीथिंग. फेसबुक पेज जो हाँ, हम दैट्स फॉलो कर व्हाट, सकते वही हैं। फेसबुक में. हाउ कैन वी कांटेक्ट हर? Okay, okay. So you can contact me through CA Pooja Chordia के नाम से. I'll just write it in the chat box. ग्रेट. मैं यहाँ पे लिख देती हूँ. It is CA Pooja Chordia on Facebook. लिख देती हूँ FB. एंड इंस्टाग्राम पे मेरा सबसे ज्यादा है, बिकॉज मैं सब कुछ इंस्टा पे ही डालती हूँ. तो अगर आप लोग इंस्टाग्राम पे हैं तो इंस्टाग्राम का मेरा आईडी है हैप्पी लाइफ विद पूजा. ओके. No space, happy life with Pooja. That's on my Instagram. Every information that you want is over there. In my bio, there will be a link on Instagram. If you go and click on that link, सारी classes की information आपको मिल जाएगी. और Joyful June जैसे महीना चल रहा है अभी, so every month I have like a timetable made wherein the time slots are also available. All the workshops are on Google Link platform, so सारी चीजें online ही होती है, उसके fixed timings है सब वर्कशॉप्स के. आपको अगर ऑनगोइंग वर्कशॉप्स ज्वाइन करनी है तो 14 से मेरी वर्कशॉप स्टार्ट हो रही है, 14th of June से. ऑल माय वर्कशॉप्स स्टार्टिंग ऑन 14th June. ओह ग्रेट. एंड मैजिक इज बिगिनिंग ऑन 21st. या बाकी सारी वर्कशॉप्स 14th से स्टार्ट हो रही है. ओके. एंड मेरा कांटेक्ट नंबर भी डाल देती हूँ मैं यहाँ पे 9826021034. 9826021034. Gigi, can you put it on Facebook also? I am putting on Facebook. All few of my posts are there on Facebook also. It is on Zoom. We'll put it on Facebook also. These things In the comment section. अच्छा ठीक है. Can anybody do that? Yeah, sure, I'll do that. Yeah. So these are just put it on the comment section and I'll also go and put it up after this. बाद में डाल सकते हैं ना नीला जी, या अभी डालना पड़ेगा? यहाँ बाद में भी डाल सकते हैं. ठीक है. Okay. We will share the live link with you. We'll do it. No worries. We'll do it. Yes. Okay. Okay. So मैं सुनाऊं आपको पोइट्री? हिंदी में सुननी है या इंग्लिश में सुननी है? हिंदी. हिंदी. ठीक है. एक हिंदी में सुना देती हूँ, एक इंग्लिश और एक इंग्लिश में भी चलेगा. ठीक है. सो एक तो मेरी फेवरेट है, बहुत छोटी सी है, दिल की बातें. एक मिनट दीजिए. एक सुहानी रात के अंधेरे में महफूज हूं मैं अपने प्यार के घेरे में. कहता है दिल बार बार जुबां से, कर दूं अपनी दास्तां बयां. न मानती जुबां और कहती बदले में, मैं तो हमेशा ही बोलती हूँ, हर दास्तां सुनाती हूँ. लेकिन जो दिल की दास्तां है वो शब्द बयां न कर पाएंगे. जुबां को तो शांत होना होगा, तभी तो दो दिल बातें कर पाएंगे. तभी तो दो दिल बातें कर पाएंगे. Lovely, very nice. Beautiful. Wonderful. Thank you so much. तो मेरी इंग्लिश में तो दो पोइट्री से एंथोलॉजीज में छपी, एक स्क्रिबल नाम से है और एक 100 फीमेल म्यूजिंग्स के नाम से है. I'll read one of my favorites from that. It's about red roses. So how I write poetry is, I just take like 5 to 10 minutes to write a poetry. मतलब मैं बस लिख देती हूँ. आप मुझे कोई वर्ड दोगे, कोई सेंटेंस दोगे, कोई फीलिंग बताओगे, तो I just start writing. And I just try to end it up with a different perspective and a different light altogether. So that's how I write it. Let me just pick it up. Just a second. Okay. It's called 50 Red Roses and 1,000 Heartbeats. Heartbeating roses have a quirky charm. The heart beats 1,000 times, even more when there is a red in the rose. We know a red rose is bidding for love. We label it for the love of one of a kind. On seeing the 50 red roses, my heart does beat, a rose for each red that I love.
One rose for my mother, who gave the red in me, my blood. One rose for my father, who taught me how to fight against the pain. One rose for my brother, who promised to save me from the red, the guard. One rose for my friends, who battled with me in the red, the transformation. One rose for my love, who brew the red in me, the journey. One rose for my child, who took the red from me by birth, rebirth. I can go on with the red roses, every time my heart beating 1,000 heartbeats. I so love the red in the roses. Every time I see, it brings newness in me. Thank you, thank you, thank you. This is so amazing. Wow. Super. Thank Wow. you. Love it. Pooja, I want to share something. Yes. I and my daughter, we used to manifest about the dog, you know, and we manifested his name also, and we adopted this dog from a shelter. और जो हमने नाम मैनिफेस्ट किया था वो उसी नाम से वो कुत्ता हमको मिला. इतना एग्जैक्ट मैनिफेस्टेशन होता है सब कुछ. आप हर चीज, कलर, उसके बालों का कलर, वो उसकी ब्रीड, सब कुछ विजुअलाइज कर सकते हो, सब कुछ दिमाग में रख के यू गेट एग्जैक्टली लाइक दैट. आई एम टेलिंग यू. I would want everybody to just unmute and share a little. Jaldi, like everybody should get 1 minute or 1.5 minutes, and they can share a little about their insights of this program, their takeaways, or some manifestation or some experience that they have got from manifestation. So let's Let me get start started. with. So I remember, you know, I used to have a gratitude diary long time back when I was working in a job. So that time, you know, I used to start manifesting the gifts on Radio FM. So that was one of the amazing time, and I was just remembering that you know, why should I stop doing it? Because time ऐसा था कि हर रोज मैं मेरी बस सोचता था कि मेरे को आरजे से बात करनी है, और गिफ्ट्स ऑटोमेटिकली आने शुरू आते थे. So at that time I used to thank all small things कि आज मेरे पसंद का खाना मिला, आज मुझे पार्किंग की जगह मिल गई, you know, आज मेरा किसी से झगड़ा नहीं हुआ, आज सारे ग्रीन सिग्नल मिले. स्मॉल थिंग. तो मेरे को लगता है कि मैं और ज्यादा पॉइंट्स लिखना शुरू करूं. पहले इसमें 4-5 पॉइंट्स, फिर पूरी डायरी. तो उस टाइम आई रिमेंबर दैट इट वाज अ मैनिफेस्टेशन. आई वाज नॉट अवेयर कि दिस इज अ सीक्रेट ऑफ यू नो मैनिफेस्टेशन, बट आई वाज जस्ट डूइंग इट बिकॉज शायद ऐसे ही गेम की तरह मैंने शुरू किया था. सो आई वाज एक्चुअली रिकॉलिंग व्हाटएवर यू सेइंग टुडे. एंड देन आई आल्सो वॉच्ड द मूवी सीक्रेट. मैंने एक कोर्स किया था डॉक्टर स्नेह देसाई का, वहां से मुझे पता लगा था law of attraction के बारे में. So I manifested few things, and I made a video as well on law of attraction. 2011 में बनाया था, and I have manifested lot of things. उसके बाद फिर मैंने एक और बनाया, बस मैं उसको देख नहीं पाता, मैंने YouTube में डाल दिया है. So thank you for the reminder कि I should see it again. और उसमें मैंने अपना फेवरेट म्यूजिक डाल दिया था. So I started manifesting early. तो जैसे ही वो म्यूजिक बजता था, गाना सुनता था, तो मेरे माइंड में वो वीडियो शुरू हो जाती है. So you manifested this also. I think you manifested this event also in your life completely. Yeah, I guess absolutely. From 2011 से 2022 आ गया. Yeah, right. Thank you so much. Thank you. I feel GJ, he's a rock star. He's very loved in lot of Delhi meetings and all. He's a very prominent figure, but he needs to get back to his 2011 days now, you know, and get back to the power of manifestation. All the best. So I would. This is a cue for a lot of people. For Mahashweta ji to start her own startup. Yes. For Gaurav ji to go back to his 2011 days. So everybody has a magic cue today. Okay, so Parul ji, आप कुछ बोलेंगी? हाँ, Parul ji, I would request everyone to be ready and yes, let's have 1 minute. हाँ, Parul ji बोलिए. इतना अच्छा बोल रही है, इतना ज्ञान हमें घर बैठे मिल रहा है, बहुत कुछ बता रही है जो हमें पता ही नहीं था, अब तक जानते ही नहीं थे हम. और अगर इनका हमें वर्कशॉप मिल जाए करने के लिए, तो हम चाहेंगे कि जरूर करें, कुछ थोड़ा बहुत जरूर सीखें इनसे. बहुत अच्छा बोला है, मैंने बहुत अच्छा समझाया है. Thank you. I would like to share, Anila ji. Yes, Shivani.
पूजा मैम, अभी मैं अनिला जी को यही बता रही थी कि जो सीनरी हमने ड्रॉ करी, दैट ट्री ना रिवर एंड एवरीथिंग, बचपन से तो ड्रॉ कर ही रहे हैं, आई थिंक वो मेरे दिमाग में बैठा हुआ था। एंड वी रिसेंटली बॉट अ न्यू हाउस, एंड जो हाउस है मेरा दैट इज एट अ रिवर बैंक, घर के पास वी हैव माउंटेन, आई सी सनसेट एवरी डे, example of the manifestation. yes बिल्कुल। एंड आई मीन आई लिव इन पुणे, हिंजेवाड़ी, एंड आई हैव अ रियर नियर माय हाउस, ट्रीज दिखेंगे, माउंटेन्स हैं, सनसेट है, एवरीथिंग। सो आई रियली थिंक कि दिस is the power of manifestation. So that's what I've been telling since the beginning, right? सब manifestation already कर रहे हैं. It's just that awareness नहीं है कि हमने manifest किया है life में. That's all. So we are just creating awareness. That's it. नहीं, कुछ hurdles भी थे, like before that house, before we got that house, but वो भी intent डाला मैंने कि नहीं, ये सब कुछ overcome होगा, and then I am gonna get this house, and वैसा हो गया. So grateful to the universe. Thank you so much. Absolutely. Thank you. मैंने जो सीनरी बनाई थी पूजा मैम, मैंने बनाई थी नदी किनारा है और एक ग्वाला बैठा है और बांसुरी बजा रहा है, बस इससे आगे मैं कुछ नहीं बनाया। Beautiful. और आपको तो बांसुरी के फॉर्म में अलग-अलग इंस्ट्रूमेंट्स रोज सुनने को मिल रहे हैं. Music has become a part of your life by Music Veranda, I think. That's also you've manifested it. Okay. शांतना, आप कुछ बोलना चाहोगे? Yeah, it was a great learning, ma'am. Thank you for that. And yeah, I have learned many things today, and I just believe it should be in your mind. That's the first thing you should do, and it happens. Miracle happens every day. Thank you. Absolutely. Thank you. Dipendu? Well, amazing session. Or again, I have reconnected to the idea of law of attraction today because of this session. Thank you so much, Pooja ma'am. I cannot draw. I'm not an artist कि मैं draw कर सकूं, पर आज जैसे ही आपने draw करने को बोला सीनरी, तो मैंने कुछ ऐसा बनाया है अपने पेज पे जो मैं मैनिफेस्ट करना चाहता हूँ. तो मन में बोल के कि ये है, ये है, मैंने वो कुछ बनाया है. It's deeply personal, so I can't share much. But yeah, maybe this is the starting of something great. Thank you so much. Perfect. पता है मुझे यहाँ एक चीज बोलनी है, just if I can interrupt, because you said it's something personal and I don't want to share. This is also something that I really feel कि हम जैसा सोचते हैं वैसा होता है, right? तो अगर हमने सोच लिया कि हमने यूनिवर्स को ये दे दिया है और अगर हम इसको पब्लिक कर देते हैं, तब भी हमारी पॉजिटिविटी इतनी है कि हम उस चीज को अट्रैक्ट करेंगे, तो वैसा ही होगा. अगर हम सोच लेते हैं कि लोग इस पे नजर लगा देंगे, that's how it works, right? It works in your thoughts. जैसे हम सोच लेते कि अगर मैंने ये दे दिया और इस पे लोगों ने नजर लगा दी, तो फिर ये चीज मिलेगी नहीं. तो यूनिवर्स तो उसी फ्रीक्वेंसी पे वर्क करे जिसपे आप, तो जो लोग सोचते हैं कि उनको नजर लग जाएगी, उनको एक्चुअली लग जाती है. उनको एक्चुअली कुछ लोगों की बद्दुआएं भी लग जाएगी, शायद कुछ लोग मैनिफेस्ट कर लेंगे नहीं ये चीज इसको नहीं मिलनी चाहिए, बदला निकाल लेंगे और वो चीज हो जाएगी. बट अगर आपकी सोच के ऊपर आपने सोच लिया कि ऐसी चीज ऐसे ही होगी तो वैसी होगी. सो अगेन मैनिफेस्टेशन वर्क्स ओनली ऑन योर थॉट. सो इफ यू रियली फील दैट, मैं क्या सोचती हूँ पता है, मुझे ऐसे बहुत लोग बोलते थे, मैं जो भी एफर्मेशन लिखती हूँ या जो भी बोलती हूँ, आई एम वेरी ओपन अबाउट एवरीथिंग, सो आई जस्ट से इट आउट. So people will be like, keep it to yourself, because everybody doesn't have good intention for you. And I was like, अगर मेरे intention सही है तो कुछ भी चीज नहीं होगी. Nothing is going to go wrong. It's अगर मैं खुद ही सोच रही हूँ कि लोगों के intentions मुझे affect करने वाले, तो मेरे intentions कितने खराब है. It's time to introspect on that and see. So if your thoughts only are disturbed, so that's again a thought process. It's just a perspective. If you want to take it. No, wonderful point. I completely get it. Wonderful. I agree with it. Wonderful, very nice. So quickly, Shweta, I'm sure you have already submitted your thoughts. No, Anything else? She wants to say something. Okay, yeah. Let's quickly do it. Yes. Unmute yourself. See, by and large, if I look back, my life has kind of, it's a potpourri of everything that I've envisaged for myself. So much so that my parents wanted me to become a medico, okay, and I wanted to become a vocalist. And but then parents का वो भी एक बहुत बड़ा प्रेशर होता है कि नाम क्या है, डॉक्टर क्यों नहीं लगता है. और मुझे म्यूजिक पसंद है, मुझे बच्चे पसंद है, तो मैं पहले तो सोचती थी कि ना आई विल बी अ पीडियाट्रिशियन, आई एम वेरी गुड विद चिल्ड्रन, मुझे बच्चे बहुत पसंद है. तो बदन वो साइंस में वो खून और वो काटना पीटना जब पड़ता है, तो ऐसा नो आई एम बेटर ऑफ स्टडीइंग द लिबरल आर्ट्स. So I pursued music. I became a performer,
and I went on to do a PhD. तो नाम के आगे डॉक्टर भी लगता है. Then I became a teacher, teaching children. So I got so many, kids also around me, and now I'm performing also. I have always had a lot of audience in the form of children who are the most authentic. So I had the best of audience. So that's it. So we manifest everything since our childhood. Again, I'm telling you, वो सबके साथ होता है. हम बस aware नहीं है कि हमने किया है. मैंने teacher बनना चाहती थी, CA बनना चाहती थी. My father wanted me to become a CA. I became a CA. Also, I wanted to become a teacher. So nobody, no part of the universe says कि आप ये बन गए तो आप ये नहीं बन सकते हो. ये हमारा blockage है कि हम क्या बनना चाहते हैं और क्या नहीं बनना. Since आपने ये बोला है कि ना अगर आप सोचते हो कि किसी की नजर लग जाएगी तो उसमें मैं I'm trying to change my thought process, because I exactly used to feel so. Apart from probably the veranda, I would never even open my mouth when it comes to what I want to manifest. Of course, I want to stay in a place like this. Okay, this is my dream. I knew it. When you put up that screen, I told you the first thing I said was this, that I know this is what you're manifesting. My papa, he has been an instrument in terms of the fact that I have taken up music as my profession. But then, he's suffering from a very serious mental illness called, loss of memory. So much so that it's so bad that he does not recognize me. So I feel, as a musician, what I know today, I wish I had known it 10 years back. My father wouldn't have reached to that level. I would have helped touch lives across the world. उसके लिए मुझे थोड़ी और पढ़ाई करनी पड़ेगी. So I would study further, and that's it, and work and perform in front of the people who wants to be touched by music and get healed, and that's it. You've already begun with that. This is your first step. And I'm really grateful to Veranda that I can share my. Thank you, Mahashweta. Thank you so much. So that brings us, I don't know what to say, that brings us close to this session, but opening of lot of things. So we are going to sleep today with a different mindset, with a different determination. And we are really looking forward to each day. And thank you so much for enlightening us. And I'm very glad that we did a session like this. And thank you, Almighty, for guiding us to do a session like this. Thank you, universe. And as always, we would like to end this session with a song. So I would request Mahashweta, Shantana, or Shivani, anybody to sing a few lines. And Chije, would you like to say something? I think all our Facebook viewers. Just gratitude. Thank you so much, everyone, for joining tonight, and the Facebook viewers. And if anyone has any questions or suggestions, feel free to ask. And if anyone has any suggestion कि हम और किस topic पे हम लोग अपने talk shows रखें या किसी special उस पे, so feel free. Thank you so much, everyone. Hearty gratitude. And let's hear lovely songs from the lovely ladies. Over to you guys. I just want to say a thank you to everybody for this session and for being this tonight. My night was really special, and thank you so much for that. Shantana, I am giving you an option. You can either sing Rose Rose Aankhon Tale ya Tera Mangal Mera Mangal Sabka Mangal Hoye Re. Whatever you want to end this session. Yes. Thank you, Pooja. Thank you so much once again. We love you. So I'll go for Rose Rose Aankhon Tale. Okay. Rose Rose Aankhon Tale, Rose Rose Aankhon Tale, la 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 la. Oh, Rose Rose Aankhon Tale, एक ही सपना चले, रात भर काजल जले, आँख में जिस तरह ख्वाब का दिया जले, ओ रोज रोज आँखों तले. Thank you.
Wonderful. Very much.